डॉक्टर सारा नवीद मलक लिख देना। चल ठीक है, डॉक्टर एडी आ गए ने। ओके हो गया सर। हेलो अब ए केड़ी आवाज आई जा रही ओबीएस खोली ओबीएस ए की हेलो ए तो मेरी आवाज ए की है। हाँ ए की है।
चेक 1 2। जी सर। यस। यस मेजर। यस मेजर। सर। यस। सर।
Testing. Check. Testing. Check.
Assalamu alaikum, ladies and few gentlemen. I welcome you all to today's session of pediatric ophthalmology. It will be including very interesting presentations, and I hope that all of you will gather a lot of interesting information from today's session. I request our chairperson, Dr. Zia Muhammad, and Dr. Hanif Malik to please. सर आ जाए ना उधर बैठने से बेहतर है इधर बैठ जाए. Our first presentation for today's session is by Dr. Sara Naveed. The topic of her presentation is Visual Outcomes and Challenges in Pediatric Trauma Cataract Surgery. Dr. Sara. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sara Naveed Malik, working as pediatric ophthalmologist at Al Shifa Trust Eye Hospital. The topic for my presentation is visual outcomes and complications in pediatric traumatic cataract surgery at a tertiary care hospital. This was a study which was conducted at our hospital. Traumatic cataracts in pediatric population is one of the significant causes of visual impairment in children. The visual and surgical outcomes in these cases is usually very variable because of many factors, which includes the extent of ocular damage, the type and location of injury, and the long-term complications such as glaucoma and retinal detachment that is associated with these with traumatic cataract. And pediatric eyes are also more prone to post-operative inflammation and visual axis opacification. So despite these insights, there always remains a paucity of data from tertiary care centers. So this study basically intends to contribute to the existing body of knowledge and assist in refining surgical techniques and post-operative management. So the purpose of the study was to evaluate visual outcomes of traumatic cataract surgery in pediatric patients and identify complications during pre, per, and post-operative phases of management. It was conducted at the Department of Pediatric Ophthalmology and Strabismus at Al Shifa Trust Eye Hospital, and it was a prospective study. So children aged 16 years or younger who underwent surgery for traumatic cataract were included in this study, and all surgeries were performed by senior pediatric ophthalmologists. Exclusion criteria included a follow-up period of less than 6 months, or if there was any pre-existing ocular pathology. Cataract extraction was performed using a standard bimanual irrigation and aspiration technique with the vitrector. All penetrating injury cases initially underwent a primary repair, which was then followed by a secondary cataract surgery. Primary posterior capsulotomy and anterior vitrectomy were performed in children aged under 3 years of age with an intact posterior capsule, and in children of any age with a PCO. Intraocular lens power was calculated based on the child's age, with a 20% reduction in IOL power for children aged 2 years or younger, and a 10% reduction for those aged 8 years or younger. And then depending upon the status of the capsular rhexis and the capsular bag integrity, either a single piece hydrophilic foldable IOL, a 3-piece IOL, or a rigid PMMA IOL was implanted. In case of lens subluxation or poor zonules, lensectomy was performed without any IOL implantation. Post-operatively, refraction was performed at 1 week, 3 months, and 6 months post-operatively. Visual acuity in children under 2 years of age was assessed using preferential looking tests, while those aged 2 to 5 years was evaluated with Cardiff cards, which was then converted to Snellen equivalents. And for children who were aged 5 years or more, the Snellen chart was used directly. Descriptive statistics were used for demographic and clinical characteristics, and visual acuity changes over time were assessed using repeated measures ANOVA. And now the results.
This table basically shows the patient demographics and the injury profile. The average age in our study was around 8.37 years. The total number was 61 eyes on which the cataract surgery was performed. Majority of the children affected in our cohort were male, approximately 70.4%, which is a finding that is often contributed to higher levels of outdoor activity and risk-taking behavior among boys. The types of ocular trauma were nearly evenly split between blunt and penetrating injuries. Wooden objects were the most frequently involved causative agents, and 49.1% of surgeries were performed more than 6 months post-injury. This is the table showing the complications. Complications were recorded across all three phases of management, that is pre, per, and post-operative. In the pre-operative phase, the most common complication was visual axis and peripheral corneal opacification, peripheral anterior and posterior synecdoche, and disruption of the anterior capsule of the lens with lens matter and AC. Intraoperative complications included most common complication was incomplete and extended rhexis. And there were approximately 37.7% of patients in which no intraoperative complication was recorded. Then in the post-operative phase, approximately 52.5% of patients were there in which no complication was recorded, and other common complications included astigmatism, IOL dislocation, and anti-uveitis. This is a bar graph that shows the distribution of IOL implantation and surgical interventions. As you can see, that intraocular IOL implantation was achievable in majority of the cases. The most commonly used IOL type was in the back foldable lens that was achieved in 35.4% of cases, which was followed by rigid PMMA lens placed in the sulcus in 34.4%, and then three-piece IOLs in 14.7% of the patients. So the choice of IOL and the placement technique was determined by obviously the integrity of the anterior and the posterior capsule with appropriate adjustments made to IOL power as documented. Aphakia was necessary in approximately 6.5% of patients due to severe ocular trauma that precluded safe implantation. And IOL dislocation occurred in approximately 9.9% of cases, some of which required surgical repositioning. जी सर अंत के होता सीधा सरू पिंजरा का सानस ओपन नबू बागा ये ना कदा कम ना दिरा करे कन्वीनर हो रहा है चिकन जास वो की जास मॉडरेटर हो रहा है चिकन वो को चेयरमैन زكا دا غيش مترسم सब Okay, this table shows distribution of visual acuity pre, post, and 3 months and 6 month post-operative time points. As you can see that pre-operatively, approximately 96.7% of patients had a vision that was worse than 20/200, and by 6 months follow-up, 26.2% had achieved visual acuity greater than 20/40. Mean logMAR visual acuity improved from 2.09 pre-operatively to 0.80 at 6 months, with the most significant improvement occurring within the first 3 months. So as we can see that approximately 26.2% of patients had achieved a final visual acuity of 20/40 or better, which underscores the potential for functional visual recovery with timely and appropriate intervention.
This is a graph showing correlation between duration to surgery and post-operative visual acuity. Early surgical intervention is widely supported as an essential to reduce amblyopia risk and improve visual prognosis. Although our analysis did not reveal a statistically significant relation between trauma to surgery interval and final visual acuity, but there was a discernible trend towards better outcomes with earlier intervention. Because children who underwent surgery within 1 month of trauma had a mean logMAR visual acuity of 0.60 at 6 months compared to 0.9 in those operated after more than 6 months. This is the change in visual acuity over time by the mode of trauma. When stratified by trauma type, both blunt and penetrating injuries show a significant improvement in visual acuity over time. Mean logMAR visual acuity decreased from 2.116 to 0.839 in the blunt trauma group and from 2.063 to 0.773 in the penetrating trauma group, indicating that both groups followed similar recovery trajectories. And in both types of cases, whether it is a blunt injury or a penetrating injury, similar visual improvement can occur over time. This is a table showing comparison of visual acuity at 6 months across age groups. Age at surgery was a significant predictor of visual outcome in our surgery. Children who were aged 12 to 16 years achieved better median visual acuity, which was 0.40, compared to younger children who were children aged 2 to 6 years, in which the mean logMAR was 0.70. This may be attributed to multiple factors, including better cooperation during post-operative care, mature visual systems, and less prone to amblyopia, and improved compliance with spectacle correction and patching. This age-related trend has been substantiated in various other studies as well. The limitations of the study was that it was a short study. The duration was short, a single center setting, and then a short follow-up period, which was 6 months. Longer follow-up is essential to capture late onset complications such as glaucoma, retinal detachment, and amblyopia persistence. And then objective measurement of compliance with amblyopia therapy, the psychosocial impact that the trauma has on the child as well as the family, and the quality of life metrics could provide a more comprehensive understanding of rehabilitation in these children. So pediatric traumatic cataract surgery can yield favorable visual outcomes, but early intervention, age-appropriate rehabilitation, and close follow-ups are critical. Plus, there is a need for regional trauma registries and multi-center collaborations to standardize treatment protocols and monitor long-term visual outcomes. This is a short video showing one of our traumatic cataract cases. As you can see, a bimanual irrigation aspiration port was made, and a scleral port was also made. There was basically a glass piece which was impacted within the lens, and it had disrupted the anterior lens capsule. So the glass piece was separated from first the iris and then from the remaining lens matter. Dr. Smith. See, as you can see, the glass piece is retrieved from the lens. And obviously at that point, the lens capsule had been disrupted. This is the glass piece removed. Now, a very careful rhexis was done, controlled and careful, and a slightly eccentric rhexis was done away from the point where the lens capsule was already disrupted. You won't be able to see it here, but once the lens matter is cleared, you'll see the rhexis, the margins of the rhexis. It's done very in a very controlled manner with the help of the Utrata. And then aspiration of the lens matter is done. As you can see now that it is a very small eccentric rhexis, but still we managed to place a foldable intraocular lens through this very mini rhexis, and the lens was then stable post-operatively as well. But the margins of the rhexis were slightly enlarged. In the end, the ports, the scleral port is then closed with 10 PG suture.
the gel is washed, and then the margin of this rexis is slightly enlarged so that it does not come in the visual axis. Post-operatively, this child had, with correction, this child had a vision of around 6.9 to 6.12. These are the limbal ports. These are also closed with the PG suture. And as you can see, the lens is stable, the AC is clear. Basically, it was a self-sealed wound. So no primary repair was done. The child came us after approximately 3 to 4 months after the surgery, after the trauma, sorry. And these are the references, and thank you. Thank you very much, Dr. Sara, for a very detailed and interesting presentation. Now I will request Ms. Dr. Ajmal Chaudhary. He is not around, so. Okay. So next we have Dr. Hanif Malik with his presentation on inferior oblique inclusion syndrome with lateral rectus. I'm Dr. Hanif Malik, working as professor in Al Shifa Trust Eye Hospital, Rawalpindi. Actually, this is a video presentation, and these are first 2-3 surgeries are redo surgeries. These patients came to us with the hypertropia in the eyes. I unfortunately no pictures, but straight away I recorded these videos. So this is uh, how the inferior oblique is attached, or during surgery it comes with the lateral rectus. People don't take care of separating it, so just want to emphasize that how to separate inferior oblique from the lateral rectus muscle. This is the first presentation. This is the I got hold of the lateral rectus, and you see this inferior oblique is very near to this lateral rectus. First of all, cut these adhesions from the lateral rectus. These adhesions cause limitation, or your results are compromised if these adhesions are there. So then I passed the sutures, I separated it. This was already a recessed muscle, lateral rectus, but inferior oblique was attached with it. You see this inferior oblique is very near to this lateral rectus muscle. So separate it. This is inferior oblique. While my plan was to recess the lateral rectus again, separation from the inferior oblique and recession of the lateral rectus. So when you are doing redo surgeries, measure this, your measurement. You see this medial rectus is 5.5 from the limbus, inferior rectus is 6.5, then lateral rectus 6.9, and superior rectus is 7.7. I am right? I think so. So measure this, first measure from the limbus, and then after 6.9, add your recession in that. So it will make like 16, 15, 17, whatever you want. So first I measured this 6.9. This approximately 7. Then I passed my needle
at 6.9. And then with the hang back technique, I did 8 mm or 9 mm recession. 60 Vicryl I generally use. You see, now it is recessed, inferior oblique is separated from the. This is the, you see, second case. This inferior oblique, you see, it is attached with the lateral rectus. So again, separate it, lateral rectus. Same procedure, first pass the 60 vicryls. These are the adhesions with the inferior oblique, separate them, same process. This is the third case. You see this inferior oblique, it's very near to this lateral rectus. This is the inferior oblique muscle. You see the adhesions between the lateral rectus and the inferior oblique muscle. This is inferior oblique. Again, same method, measure it from the limbus. And because there is a lot of blood and fibrosis, so it's better to do hang back technique in these cases. Always separate the adhesions from the muscles because they limit your result. So in this case, you can do the adjustable sutures with this also. Probably, yeah, no, not adjustable done, but with this hang back technique, I did. Now I want to show you how it is trapped and how it should be done. You see, this is inferior oblique. When you go far behind, there is every chance that you will get hold of the inferior oblique. So be careful while you are passing your scant hook. Don't go far behind. So you see, this inferior oblique, I have purposely taken it just to show it. So you see, this is inferior oblique and it has come with the lateral rectus. This is inferior oblique. And when you will pass the sutures over here, you will get hold of the inferior oblique and this comes. So because I knew, so I removed my scant hook. This is in lateral rectus. So don't go
far behind when you are doing surgery on lateral rectus. Have a good exposure. And then just sweep your this squint hook so that if an inferior oblique has come, it will go back. You see this is now inferior oblique well behind from the away from the lateral rectus. This is inferior oblique. You can see that pink thing over there. That is inferior oblique. So this is inferior oblique. It's far behind the lateral rectus insertion. So when you pass your squints, then just sweep it down so that it will not come in your squint hooks. Thank you very much. ये पेशेंट क्या था प्रेजेंट थे Thank you very much, Dr. Hanif, for sharing your surgical expertise with all of us. Now, I will be presenting a case series of fragile eyes, that is, a case series of exposure keratopathy progressing to corneal abscess. A brief introduction to the topic. As we all know that the neonatal eyes are vulnerable. And why are that? Because there is incomplete eyelid closure. Normally, the neonates have lag ophthalmos. The tear film is immature, aqueous layer is deficient, and also the meibomian gland, which is leading to the secretion of meibum, and due to impaired blink reflex, the tear film is unstable. The NICU risks, which further add to the eye vulnerability, are prolonged mechanical ventilation, sedation, and neuromuscular blockade. All these risk factors aggravate the eye vulnerability to exposure. Why does it even matter? Because unnoticed corneal drying can lead to severe outcomes. A brief background. Exposure keratopathy is basically the loss of corneal epithelial integrity due to drying and exposure. The complication pathway here is that whenever there is an epithelial defect, it leads to formation of ulcer. And when the ulcer gets infected, it becomes a corneal abscess. And when the corneal abscess is not treated adequately, it will lead to melting. It is a rare but devastating disease, and there is a potential for permanent visual loss. Now, our first case was a child 9 months old with a gestational age of 34 weeks. He had a history of long ICU stay for pneumonia, for which he was undergoing mechanical ventilation. There were inadequate eye protection measures, due to which he developed epithelial defect, and despite of the treatment that was provided by the NICU staff of lubricants and topical antibiotics, there was formation of ulcer, stromal necrosis, and eventually abscess was formed. Ophthalmology consultation was taken late. The medical treatment that was given in the NICU by the local doctors was insufficient. When the patient presented to us with abscess, we admitted the patient in septic ward and started him on fortified antibiotics. But as it was a case of perforation, so we went for tectonic graft. The globe integrity was restored, but as we all know that the visual prognosis in such cases is poor due to central scarring. These are the pictures, the pre-op pictures, and the other ones show the post-op pictures after the tectonic graft. A second case was a neonate with a gestational age of 31 weeks. He had a history of low birth weight and respiratory distress syndrome.
He presented with perforation. He had corneal abscess which was not responding to topical antibiotics. The eye was soft when he presented, and on B scan he had choroidal thickening. We planned his emergency tectonic to restore globe integrity. These are the pre-op pictures which are showing eccentric corneal abscess with full of exudate anterior chamber, and this next picture shows tectonic graft. The next case was a child with a low birth weight, 1.7 kgs. He had IUGR and gestational age was 36 weeks. The significant thing is that he was suffering from malnourishment. The mother also showed malnourished signs. He contracted measles at the age of 3 months. This progressing to subtotal keratitis, and he presented with 2 healed abscess leading to opacified cornea. That the cornea. So now coming to the discussion of the case series, the key observation
so gentle manipulation and smaller capsular access is recommended. In microcornea, often persistent fetal vasculature is present, so pre-op imaging is necessary. There is a visual comparison of the dimensions of a normal cornea and a microcornea. Now coming towards surgical challenges, we have difficult capsular access because of the increased elasticity of the capsule and poor visibility. For that, we use trypan blue dye, which not only increases the visibility, but also decreases the elasticity of the capsule. We can use microforceps and take assistance from femto if present. For lens aspiration issues, we use bimanual irrigation aspiration with small tips that maintain interior chamber. For IOL sizing and placement, we use customized intraocular lens or leave the patient aphakic, and we can plan secondary IOL fixation later. To overcome the obstacle of limited view, high magnification microscope and wide-angle viewing is used. Extended tools are too large for microcornea patients, so we use pediatric phaco tips and vitrectomy cutter with small gaze like 20 to 23 gaze cutters. For poor visualization, we use retroillumination techniques. There are intraoperative complications like iris prolapse, for which we use low flow settings, and for poor pupil dilation, we use iris hooks or pupil expanders. There's always a risk of posterior capsular rent or vitreous loss, so be ready for anterior vitrectomy. Corneal endothelial damage can be prevented with the help of dispersive OVDs. Last but not the least are the post-operative challenges, like amblyopia, which can be handled with early optical rehab like use of glasses, lenses, and patching. Aggressive steroid use and cycloplegics are used to reduce the chances of inflammation. Lifelong IOP monitoring is mandatory to detect and manage glaucoma. There's an important risk factor, that is the non-compliance, for which family education and regular follow-ups is necessary. Here's a video presentation of technical aspects of surgery in a case of microcornea with both horizontal and vertical diameters measuring 6 millimeters, which is further complicated by posterior synecdoche. This video shows that even the most complex cataract surgeries can yield excellent outcome when performed by experienced and meticulous surgeon. Our take-home message is that pediatric cataract and microcornea are no doubt complex, but manageable. It requires tailored planning, special instruments, a stepwise gentle approach, and of course, team approach. Thank you.
Thank you very much, Dr. Fawzia. It was indeed a wonderful presentation. I will now request our next presenter for the day, that is Dr. Ambreen Yusuf. She'll be discussing accuracy of SRKT formula and postoperative refractive error prediction in pediatric cataract surgery. Assalamu alaikum. I am Dr. Ambreen Yusuf, currently working as a fellow pediatric ophthalmology in Al Shifa Trust Eye Hospital. Starting with the topic today, in the name of Allah. My topic today is accuracy of SRKT formula in postoperative refractive error prediction in pediatric cataract surgery. First of all, I would talk about what is the difference between pediatric cataract surgery and adult cataract surgery. We all know that pediatric cataract is the most common avoidable cause of childhood visual disability, which is a lens opacification that disrupts normal visual development. Hence, early surgical intervention is empirical for preventing amblyopia, followed by optical correction, visual rehabilitation to achieve binocular vision and bifoveal fixation. For that matter, talking about the prevalence of congenital cataract, it is approximately 10% childhood blindness, and 20 to 40,000 children every year are born with congenital cataract. Depending upon the ethnicity, 1 to 15 children per 10,000 children are born with this problem. However, in Asian population, the noted prevalence is 3.8 per 10,000. Now, what are the challenges that we face? In contrast to the pediatric cataract surgery, there are certain challenges that we face in pediatric IOL power calculation. First of all, there is the inaccuracy of ocular biometrics due to poor cooperation and loss of fixation during biometry. When we talk about adult cataract surgery, optical biometry is the gold standard for doing biometry. However, during pediatric biometry, this favorability of optical biometry is lost because there is no foveal fixation, poor cooperation of the patient. Hence, there is inaccuracy in the ocular biometrics and the need for doing it under GA or sedation. Secondly, compared to adult IOL power calculation, all the formulas have been devised for adult biometrics. When talking about these same formulas in pediatric population, there is difference in these biometrics such that the axial length in pediatric population is shorter, the corneas are steeper with higher K readings, the anterior chamber is shallow with smaller anterior chamber depth, and the need for anterior vitrectomy also affects the effective lens position in pediatric population. Secondly, there is a phenomena of rapidly growing pediatric eyes, which leads to myopic shift. Hence, the need for undercorrection to achieve emetropia at the age of 8 years, along with prevention of amblyopia and anisometropia. So, briefly touching these phenomena, the axial length at birth is 16 to 18 millimeters, and it increases to 21 millimeters at the age of 1 year, and 23 millimeters at the age of 3 years, stabilizing around 13 years of age. The K readings are steeper at birth, measuring 52 diopters at birth, and decreasing to 42 to 43 diopters at first year of life. Also contrasting to the lens power changes that are 35 diopters at birth to 19 diopters at 2 years of age. So now talking about the pediatric IOL power calculation, which are the formulas that have been proven by different studies to be relatively accurate.
There was a large meta-analysis conducted by Hong, which included 1,781 pediatric cataract eyes, and they identified that Barrett U2 and SRKT and Holiday 1 are relatively more accurate for IOL power calculation in pediatric population. Most commonly used in our setup is SRKT and overall in other setups also. Barrett Universal 2 offers greater accuracy for older children where the axial length growth has slowed down. There are newer 4th generation formulas, Hill, RBF3 and Kane, which are also favored by some setups. And the European Society of Cataract and Refractive Surgeon ECRS online calculator incorporates 6 calculation formulas, BU2, EVO2, Hill RBF3, Hoffer Q, Kane and Pearl to calculate the IOL power calculation. There are various predictive models for the undercorrection in pediatric IOL power calculation. The most common is the HUN, where 80% emetropia is targeted under the age of 2 years and 90% is emetropia is targeted from 2 to 6 years of age, keeping the eye 20% hypermetropic in this age population and targeting emetropia around 7 years of age. Slight differentiation is Prost and Coker, where in Prost, the higher age group emetropia target is the same. However, their emetropia target is slightly lesser to 80% in 2 years of age also. In Coker, they they keep the emetropia target in the smaller age population to the same 80% target under the 2 years of age. However, they increase the emetropization near 4 to 6 years of age. There is a second method where they target the post-op refraction instead of the percentage of emetropization. There are multiple predictive models. The most common are Crouch and Inyedi. Inyedi formula is refractive error plus targeted refractive error plus age of the patient, which equals to the amount of 7. So they keep the emetropia at the age of 7 years. There is slight variation in Trivedi and Wilson, and however, Chen refractive model predicts by incorporating the spherical equivalent of the fellow eye. There are other newer, recently studied formulas by Weekly et al. And Metzing Nischel et al. The infant aphakia treatment study protocol was +6 to +8 hyperopia at 1 year of age, and their IOL implantation average age was 2.5 months. So we talked about the myopic shift. So as the axial length of the eye grows in proportion with lens and cornea in a normal child, the refraction of the normal infant eye remains close to emetropia. However, when we do a cataract surgery and we implant an IOL, we are disrupting the balance between the cornea and the lens. So there is an axial elongation leading to myopic shift after cataract surgery. It is more pronounced between the age of 1 to 3 years of age, and Trivedi et al. Demonstrated significant myopic shift in unilateral cataracts as compared to bilateral ones. And it is also noted by some authors that there is a slower myopic shift in longer axial length patients. Other factors are also affecting the refractive outcome, which are hereditary factors, which are some families have hereditary hyperopic or myopic refractive errors. There is the status of the other eye, which we also have to take into account. The compliance of glasses, the age at the formation of cataract, age at which the eye was operated. There may be certain surgical complications. There may be IOL position variability due to capsular fibrosis or phimosis and postoperative increase in intraocular pressure. So the study that we conducted at Al Shifa Trust Eye Hospital from 1st December to 30th May, it was a prospective descriptive study. We included 145 eyes of 85 patients. 56 of them were male and 29 were female. All the patients were aged 6 to 8 years of age, and we excluded all the patients having traumatic cataract or any complication of the anterior or posterior segment, including microphthalmia, glaucoma, PFVS, or any other surgical complication.
There were 15 children which had unilateral cataract, including 11 males and 4 females, and there were 70 children that had bilateral cataract, including 25 females and 45 males. This is a pie chart and a depiction of these demographic details that I have discussed. We can see that it is more common in the male gender. So the results that we found were that the mean axial length in these 6 months to 8 years of pediatric cataract population was 21.9, with a range from 17.49 to 31.44 millimeters. The mean implanted IOL power was 22.13 diopters, and we implanted as low as 3 diopters IOL and as high as 36 diopter IOL. We calculated mean predictive refractive error, which was 1.3 plus minus 1.68 diopters of standard deviation, and mean absolute error was 1.87. The pie chart here shows the absolute prediction error. The absolute prediction error is slightly more accurate, which is less than 0.5 in 27% of our population. However, it was towards the inaccurate size, which is more than 2, in 36.4% of our study population. In the bar chart, I have compared the distribution of this absolute prediction error by age groups. The distribution is grossly similar. However, there is slight variation in the age groups of 3 to 4 years and 4 to 5 years. I compared this absolute predictive error by axial length groups in this table. I divided the axial length into, I divided the patients into 3 groups depending upon their axial length. Small axial length was considered where it was less than 22 millimeters, and longer when it was more than 24.5 millimeters, and in between there were moderate patients. We find that the predictive error and the actual refractive error was significantly different. And when we compared these prediction and absolute errors by age group, there was no significant difference between the different age groups. So the main parameter which was defining the accuracy of this IOL power calculation was absolute predictive error. Absolute predictive error value was slightly towards the higher side, hence our overestimation of IOL power was undergone. And the difference between the variable axial length groups was unremarkable. This is the same depiction in a graphical representation. Here we did a Kruskal-Wallis test to show that the absolute prediction error by age group is statistically insignificant. So now comparing the mean absolute predictive error by age groups, we can see that it is grossly higher in 4 to 5 years of age group. So the conclusion that we made was that there is statistically significant overestimation of refractive error by the prediction methods observed across all the axial lengths and age groups. The difference was largest in shorter axial length groups and younger age groups, and these results underscored the need for adjustment factors or improved models in pediatric biometry, especially in the eyes with short axial length or in children with less than 3 years of age. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Ambreen. I will now request our next presenter for the day, Dr. Farah Amin, for management of an isomyopia with contact lenses.
Assalamu alaikum. I am Farhameen, working as optometrist in DHQ Hospital, Haripur. Today, my topic of presentation is management of anisomyopia with contact lenses. Anisomyopia is subtype of anisometropia. It is condition in which there is significant myopic refractive difference between two eyes. It is not so common as regular myopia, but occurs in notable percentage of cases. It can affect depth perception, binocular vision, and overall visual acuity of patient. And if refractive difference is greater than 4 diopter, then there will be increase in risk of myopia. The case I would like to present here is young female, age 14 year, presented to IOPD with complaint of headache, blur vision, difficulty in maintaining focus, and she has no idea of using any contact lens. On examination, her unaided visual acuity in right eye was counting finger, and while in left eye it was 6/15. And her dry autoref reading in right eye was -10 diopter and -1 diopter with no cell in left eye. And after cyclorefraction, her reading was -10.5 diopter in right eye and -1.25 diopter in left eye. After refraction, her best corrected visual acuity was 6/18 with -10.25 diopter and 6.6 in left eye with -1.25 diopter. On cover test, she has exophoria and myopic fundus, right eye have myopic fundus. On assessment, anisometropia was confirmed as there was difference of 1 diopter between two eyes, and right eye amblyopia was there as visual acuity difference was greater than 2 lines, and right eye suppression was there with work dot test. Management options for this case was spectacles, soft contact lenses, combination therapy in the form of spectacles and soft contact lens, refractive surgery, clear lens extraction, and patching therapy. Now, single treatment, there was problem was image disparity. The image disparity that is tolerable is 6 to 8%, while in this case with spectacles, image disparity was 11.36%. And with contact lens, if we prescribe single treatment as a contact lens, there will be image disparity of 12%. I prescribed 3.5 -3.5 diopter glasses in right eye with -6 diopter of soft contact lens, while in left eye glasses of -1.25 diopter was prescribed. Her refraction was defined after every 6 to 8 months. Her recent visual acuity was improved to 6/9 partial with this therapy. When visual refraction or when her visual acuity will be equal in two eyes, the further option for improvement will be clear lens extraction in right eye or refractive surgeries in both eye. Early examination leads to early detection, and myopia can be prevented by early treatment, and parents as well as patients should be guided about myopia and possible complication of myopia. Encourage everyone for regular eye examination. Outdoor activity should be advised for a myopic patient, and if myopia progression is greater than -0.5 diopter in 6 months, then myopia management option should be applied. Early detection is the key to successful goals. The early you diagnose a case, the better will be the results. Always go for innovative approach and document that. Take home message is that it's better to do something earlier rather than saying we can't do anything for you now. Thank you. Thank you very much, Farah. Our next and last presentation for today will be by Dr. Taiba Burhan, and the topic is neuro-ophthalmic examination of squint patients.
Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tayyaba Burhan. I'm working as senior orthoptist and currently working in the Oculoplastic Clinic, Mayo Hospital, Lahore. The prevalence of TBI in Pakistan is predominantly caused by RTAs, falls, and violence, resulting in approximately around 3 lakh new cases annually. While there is not comprehensive data, estimates suggest stroke incidence in Pakistan is around 250 per 1 lakh people annually, and translating to approximately 35 lakh new cases each year. Globally, stroke is a leading cause of death and disability, with approximately 1 in 4 adults over 25 expected to experience a stroke in their lifetime, according to the World Stroke Organization. So there can be many reasons of the traumatic brain injuries like falls, assaults, traffic accidents, and few are unknown. A significant portion of the CNS is involved in the process of vision, and hence visual symptoms such as defective vision, transient obscuration of vision, visual field defects, headache, and diplopia could be symptom of stroke. Monocular vision loss, field defects such as bitemporal hemianopia, cortical blindness, and afferent visual dysfunction such as ptosis, INO, gaze palsies, scaedic intrusions, impaired smooth pursuits, and nystagmus. Most of the above present with other non-ocular symptoms as well, depending on the site of the lesion. Neuroophthalmic disorders, NODs, are the diseases of CNS that manifest in the visual system, may cause visual disturbance, motility problems, involvement of the optic nerve, and pupillary responses. And there is poor awareness in general, but stroke varying signs and symptoms, especially in South India. One study in a tertiary hospital in South India revealed a median time to diagnose close to 12 hours, long beyond the window for meaningful intervention. So while discussing the symptoms of the patients, they have double vision, binocular diplopia, eye deviation, blur vision, eye strain, difficulty in focusing or reading, headaches, abnormal head postures, poor depth perception, closure of one eye, fatigue of eye, especially in evening, suggestive of myasthenia gravis, photophobia, and oxalopsia. So there are basically some of the causes of the neurological squints: stroke, tumors, trauma, demyelinating diseases, MS, myasthenia gravis, thyroid eye disease, and CCDs, congenital cranial disinnervation disorders. So there can be other reasons as well of the neurogenic disorders: internuclear disorders, INO, 1.5 syndrome, 8 and 1.5 syndrome, Vibino, bilateral INO, unilateral INO, gaze palsies, horizontal gaze palsies, vertical gaze palsies, skew deviation, ocular motor apraxia. So this picture basically shows the presentation of the 1.5 syndrome. This is one of the picture of the thyroid eye disease. So patients were also presenting with the pupil anomalies like Holmes-Eddy's pupil, Horner syndrome, and having the bilateral pupillary defects, Ergile-Robertson pupil, pontine stroke, and mid-brain compression. There are also a few of the mid-brain syndromes the patients were presenting with: Weber syndrome, Benedict's, Nothels, Claude's, and Perinaud's. So while coming to the OPDs, most of the patients were coming with the complaint of the double vision. They have the pupillary defects, they have visual loss, they have field defects. So there can also be the life-threatening conditions as well when the patient is presenting with these complaints, specifically sudden onset of diplopia, sudden onset of vertical nystagmus. So in my study, it was retrospective. 550 males and females were included. The patient presenting in Mayo Hospital oculoplastic and neuro-ophthalmology clinics. Duration of study was 3 months. And I basically gathered the data from January 2024 to 2025.
So inclusion criteria included all of the patients with concomitant strabismus. It were neurogenic presenting with the mechanical disorders or myogenic disorders as well. The aim and objective were to find out the most commonest neuroophthalmic symptom in patients and to find out the most commonest disorder presented. So the tests which are done in the patients were, first of all, the visual acuity, refraction, fundus examination, visual fields, intraocular pressure, convergence, saccades measurement, neuroimaging, of course, not done by me, diplopia charting, pupil examination, nystagmus evaluation, Hess or Lees test, past pointing, sensory test evaluation, and motor tests. Out of 550 patients with neuroophthalmic findings presenting in orthoptic clinic, Mayo Hospital from Jan 24 to 25, 20 had thyroid eye disease, 3 had vertical nystagmus, 4 had myasthenia gravis, and 357 had abducent nerve palsy, 30 had third nerve, 100 had acquired trochlear nerve palsy, 2 with the INO, 32 with pupil abnormalities, and 2 with the horizontal gaze palsy. So this table basically shows the prevalence of the neurogenic disorders or the problems patients were presenting with. And this table shows the presenting complaint of the patient. They were presenting with the head posture, 78.5% were presenting with the abnormal head posture, 86 with the binocular diplopia, and most of the patients, they were presenting with with any type of the deviation, either exo, ESO, outward, upward or downward deviation. Headaches, difficulty in near work, oxylopsia, and blackouts. So the pie chart shows basically the percentages according to the nerve palsies or the disorders they were having. The most prevalence, as I already told you, was the fourth nerve. Most common findings on their MRI, bearing 1, acute to subacute infarcts were the common findings. The expectations being a patient presenting 2 months after a road traffic accident. Surprisingly, his MRI revealed a chronic infarct in the left temporal and occipital lobes. One of the patients had a hemorrhagic transformation of the acute infarct, with the rest being ischemic infarcts. Conclusion, the need for improved neuro-ophthalmological assessment and a coordinated multidisciplinary approach to NODs are the highest priority. This should be. Proper coordination among treating physicians with the eye care team with a multidisciplinary approach, it was missing basically. And there is an urgent need for addressing limited human resources, particularly there are not properly or neuro-ophthalmic clinics in the eye departments, and of course not neuro-ophthalmologists. And developing a multidisciplinary approach to manage NODs and to reduce basically the burden of the blindness and visual impairment. Sometimes this is also happening while the patients are referring to us, they have not done up with the proper evaluation or assessment. Most of the patients, they are having monocular diplopias, but they are referred to the for the orthoptic assessments for the Hess tests or Lees tests. So this also happens. These are basically the performers I had included in my study. I gathered data by these types of performers, separate performers for the ptosis evaluation, for the thyroid eye disease. This is for the ptosis assessment performer. And this is the performer of the thyroid eye disease. These are basically few of the pictures of the visual field defects. These are the tests done by me at my clinic. Lees screen tests with a paralytic squint. You can see on the both sides the acquired left sixth nerve palsy, and there is acquired third nerve palsy as well. This is how I do the orthoptic assessments in my clinic in oculoplasty. These are a few of the sensory tests I'm performing, like Frisbee tests or PNO, and the importance of creating a differential diagnosis is understanding of the disease process, well recognized component of medical education and modern medicine. Recommendations. Developing
virtual clinics for consultations with neuro-ophthalmologists and orthoptists, recruitment of more neuro-ophthalmologists for early diagnosis, provision of more advanced equipment for investigations, encourage high-quality research and audit in neuro-ophthalmology, orthoptics, and develop and support collaboration between orthoptists. And by providing CPD opportunities for orthoptists with an interest in neuro-ophthalmology. So this is my take-home message. Strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. So it should be done while we are working in a team, including the neurologist, neuro-ophthalmologist, and orthoptist. We can come up with the better results. Thank you very much. Thank you very much. Now this brings us to the conclusion of today's session. I will request our chairperson, Dr. Zia Mohammed, to please share a few words. It was a very good session, and all the papers were very excellent and educative and informative. It will be difficult to comment on each and every paper because of time constraint. But I think I need to congratulate Professor Hanif Malik for taking a lot of pains, and he's trying very hard to train and educate these young and budding pediatric ophthalmologists. And I think it will go a long way to develop pediatric ophthalmology and pediatric ophthalmology care in this part of the world. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. I will request Professor Zia, Dr. Hanif, and Brigadier Sabi to please come on the stage and distribute shields among the participants. Close attended. So our first participant for the session, Dr. Sara Naveed Malik, please come and receive your shield from our chairperson, Professor Zia. ऐसे पिक्चर ले लो. Next we have Professor Hanif Malik. हो गई है? अच्छा. So next it's me. So our next presenter is Dr. Fauzia Noreen. Next we have Dr. Amreen Yusuf. Next we have Farah Amin. And our last presenter for the session, Tayyaba Burhan. I will request all the participants to have a group photo with our worthy seniors with their shields. Woo.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Meanwhile, I welcome you to challenging cataract session. Cataract handling, tricky scenarios is the actual name. Is Dr. Shehzad Iftikhar. He is supposed to be the moderator. Is he available? और डॉक्टर सबीहुद्दीन तो हैं co-chair of the session. Sir, welcome. Nice to have you. हम आपको अपग्रेड कर देते हैं. You are the chairperson. Happily promoted. Thank you. So I will act as the moderator and sir will act as the chairperson. And the speakers are available for the session. Dr. Ashok Kumar Narsani. He is not available. लगता है हम तुम होंगे बादल होगा रक्स में सारा जंगल होगा शरीफ हाशमानी साहब भी नहीं है साद बिन सुहेल Ziaul Mazari is there. Saad is there. Saad आ जाएं आप. So we welcome Dr. Saad bin Suhail, navigating comprehensive complexities of managing obstacles. Managing complexities and managing obstacles associated with phacoemulsification in a vitrectomized silicon filled eye. Very interesting topic. So let's see how Dr. Saad enlightened us about this complex cataract surgery. कर दे Is it see open? Yeah, no problem. ये अपना बरकरार है सर सर्जिकल मैनेजमेंट ठीक है चलो ठीक प्लीज स्टार्ट Good morning, everyone. My name is Dr. Saad bin Sohail, and I'm currently working as a registrar at Al Shifa. Today, I'll be talking about a challenging scenario that many surgeons may encounter, that is performing phaco in an eye that has previously been vitrectomized and currently filled with silicone oil. These eyes present with unique challenges due to altered anatomy and inflammatory changes. In this talk, I'll highlight key obstacles and how to manage them for safer surgical outcomes. So what can be the obstacles that you'll face in such an eye? These cases often come with corneal haze or degeneration. There might be oil in AC. There might be mid-dilated or non-dilating pupil due to synechis or pupillary membrane. We might also encounter iris neovascularization, which may cause bleeding during the surgery. There also might be raised IOP. We also may face difficulty in doing a rhexis because of a fibrous membrane or plaque over or under the anterior or posterior capsule. And furthermore, we
might also end up with a compromised posterior capsule. So theoretically, these can be the challenges. Now I'll showcase an example of a case that I did during my residency last year. And I encountered most of these complications in that case. And I'll narrate the strategies that I used and what other alternatives that can be used. Other than the oil-filled eye status of this eye, the patient was also suffering from Parkinson's, so there were also head tremors present. I've tried my best to stabilize the video with the software, but you still might feel a little shaking during the video, so sorry in advance. You'll notice the initial So, as you can see, the patient is suffering from some head tremors. We can use different strategies to deal with that. I utilized the palm of my forehands to stabilize the eye in this case. Otherwise, we can also use chin rest or forehead rest as well. Now the obstacle of the posterior synechies. I'm using a hydrocannula to break the anterior posterior synechies, but now the bleeding has ensued. prefer utilizing the hydrocannula for Now what should I do now? There are some strategies that I can employ. First of all, I just use a Simcoe cannula to increase the pressure of the anterior chamber to stop the bleeding, but I was not successful with that. Other strategies can be increasing the pressure of the AC with a viscoelastic or putting an air bubble in the AC. But here, when I use xylocaine adrenaline, it's halted the bleeding successfully, which I'll show in the video now. Or air bubble are viable options. Pottery would be our last. Finally, the bleeding has stopped now. Unfortunately, the patient's compromised corneal health And resulted in here I'll stain the cataract, and as the corneal health was not great, the iris and cataract details might be a little hazy, and in such a cataract it's good to stain for at least 30 seconds if it's not diluted. but not in this one. Now I'm breaking if the adhesions, if there are any left, with the help of viscoelastic. We have to remove As the pupil was mid dilated, I can either use iris hooks or use pupillary stretching. Here I use pupillary stretching for this case. or pupillary stretching can aid in dilation. In this case, I employed pupillary stretching. Now I'll put in some surgeons gel even use a scissor to to make these. start the rexus. I started off with a cystotome, The anterior capsule may and I exhibit was having a little even trouble deeper visualizing the vein of fibrosis anterior in such capsule. cases, So I which necessitates experimented manual with a few rexus with a filters, micro-scissor and or then I resorting used to a an opener Utrata software. forceps to complete the I rexus, encountered which some I'll show difficulty now. during the rexus because of the hazy view, so I experimented with different filters for enhanced visualization. Sometimes the anterior capsule can be very fibrous in such cases. In those cases, it's we can either use a micro scissor to nick the anterior capsule, or do a can opener capsulotomy. Now, there was a fibrous membrane over the cataract also present, which was under the rexus, for which I used a cystotome. So to address it, I And now I'm utilized doing a the system hydrodissection next to the really make blade. sure the lens is spinning. Alternatively, a micro scissor or a cutter can also be employed to manage it. Now I'll utilize a stop and chop technique. As the cataract is dense, I would like to make a deep groove and make sure that the groove really goes through and it's not only superficial. Now, in such cases where there is oil, a dense cataract, Now I'll fibrosis, zonules turn may around be and do the grooving on the other utmost side. Gentleness during the procedure. Some surgeons prefer a direct chop technique to avoid stressing the zonules. However, I opted for a stop and chop approach with minimal downward force, given the mid-dilated pupil and the patient's head. Now during further chops, it's essential that I utilize minimal force and keep my probe in the center, as the pupil is not very well dilated, and I'm using my chopper to make sure the iris doesn't come in the probe. And as the cornea is not great, it's good to put in viscoelastic after half the nucleus is done.
सर म्यूजिक था, सर नरेशन भी थी लेकिन वो सर थी लेकिन okay, sir. Now after takes. After I'm done with the last piece, you can see a shiny plaque at the posterior capsule. I tried polishing it with the Simcoe cannula very gently, but I realized by that point that it will not come off. So what should we do here? In this case, the plan was not to remove the silicone oil, so it wasn't ideal to do a posterior capsulotomy here. So I left the capsule intact, and we plan to do a YAG later on, or if the YAG doesn't work, we can do a surgical posterior capsulotomy when the oil must be removed. Here just I'm finishing off with the subincisional cortex. A vital point to mention in this case is to maintain the AC during the procedure, and we do that by using viscoelastic when we're removing the phaco probe, and we also should remove our instruments very gently during the case. If we don't do that, then oil might migrate into the anterior chamber. Sir, Rainer. Yes, sir. नहीं सर बैग के अंदर ही जी सर थैंक यू Yes, it was a nice presentation. Basically, to begin with, we could see that it was a very difficult case, especially the bleeding, and it was nicely controlled, and you did a good job. Always try to keep the posterior capsule intact, because don't go for whatever the thickness of the posterior capsule is. There is fibrotic plaque or it is fibrosis. Do not try to open it, because at this stage the silicone oil is there. It will all come out in the anterior chamber, and it is going to flood the anterior chamber. It will be compromising the endothelium, colon endothelium. So don't do that. Let the oil stay there and remove the oil, and then if required we should do a posterior capsulotomy, right? Yes. So thank you, Dr. Saad. Saad, the siliconized dye is a big challenge. At one point, Dr. Saad mentioned that's very vital in these scenarios. That is, keep the chamber formed. Never let your anterior chamber collapse. And that happens between the change of instruments. When you take Simcoe out and then you take viscoelastic and inject. Better option is to use anterior chamber maintainer. It's fully recommended so that the control of the anterior chamber comes in your hands and the chamber never collapses. Even if it collapses for a very small period, few seconds, the zonolysis may occur because of the buoyancy of silicone oil. And that's the only thing I may add, that the anterior chamber maintainer is really recommended in these scenarios. Otherwise, you did a wonderful job. Another thing I would suggest is that perform the pupil stretching before staining the capsule. And get a well dilated pupil before staining it. The pupil stretching technique is good enough, and you do it both 3/9 and 6/12 axis. And I have seen that even the people advocate use of pupil hooks, that the pupil physiology will not be lost. It's lost. When you dilate the pupil with pupil hooks and you keep it there for 15-20 minutes, the pupil will never be reacting normally after that. So I feel the pupil stretching and the use of hooks also stretches the pupil. So if you can dilate the pupil with simple stretching like Dr. Saad did, it's good enough. So आगे बुलाएं sir. I have just one more comment. As Dr. Mazri said, that stretching of the pupil should be done before putting in the dye. So the thing is that it's a good idea, because once the pupil is dilated, it stains very well. Because if the pupil is small, the anterior capsule does not stain well. But the challenge is that
once we enter the anterior chamber without the viscoelastic, so the chamber collapses and endothelial damage is a thing which is And as a problem. Insert the maintainer. Yeah. So if that the maintainer you is there, don't have a so problem. that's a good idea to have the maintainer there so that you can do that process. Otherwise, if you put in the viscoelastic first and try to do it, the anterior capsule does not stain very well. So the job is not done. So anterior chamber maintainer, I think, is the choice that you should do. Okay. So next speaker is Dr. Ashok Kumar is here. Okay, and Dr. Sharif Hashmani? Okay, fine. So then Dr. Ayan Sabi. And the topic is surgical management of anterior segment trauma. You will have 10 minutes, 1 minute extra. So in the meantime, we can have a few comments about these eyes which are filled with silicone oil. It is definitely a challenge which is commonly seen in the VR department, but at times we also get those cases in general ophthalmology. So taking this cataract out is always a challenge. At times the pressure is high in such eyes, at times the zonules are very fragile, and at times the silicone oil is already there in the anterior chamber. So as soon as you start the surgery, the oil starts coming into the anterior chamber, and it's a big challenge. So they are always difficult cases, but once you start doing them, then you can sort of get hold of them. Good morning, everyone. My name is Dr. Ayan Sabi. I'm a registrar at Al Shifa Trust Eye Hospital, and my topic for today is surgical management of anterior segment trauma, where I'll be sharing a surgical video of a patient I operated on a few months ago. So in this case presentation, we explore ocular trauma sustained by a 60-year-old male patient who presented following blunt trauma to the right eye from a clenched fist. The patient's primary complaints included photophobia and severely reduced vision, limited to hand movements. On examination, key findings included traumatic mydriasis, as you can see, and a dislocated crystalline lens which had migrated into the vitreous cavity. This case highlights the severe impact of blunt ocular trauma on both anterior and posterior segment structures and the clinical implications of lens dislocation and pupillary dysfunction. Now let's see how I approach this case surgically. So since this image is actually a two-dimensional view, it appears as if the lens is in its normal anatomical position. However, you will see that that's not the case. Gentle scleral depression with a cotton swab reveals the dislocated crystalline lens in the anterior vitreous cavity. An access marker is used to mark the precise entry points for the 27 gauge needles for later haptic docking, one at 3 at the other at 9 o'clock positions. A pars plana incision 3.5 millimeters from the limbus is created with an MVR blade. The same MVR blade is used to gently elevate the dislocated nucleus into the anterior chamber and to prevent it, and it is stabilized with the help of it to prevent it from falling back.
Simultaneously, a pars plana infusion is initiated to stabilize the posterior segment and prevent the lens from again falling back into the posterior segment. With the help of a limbal port, lensectomy is performed using a vitrector, removing the crystalline lens material efficiently. Highest cut rate is used and a vacuum of about 300 to 350 millimeters of mercury is applied. Once the lens has been adequately removed, then vitrectomy is done via the limbal incision. Cut rate is again kept maximum and vacuum is reduced to about 100 to 150 millimeters of mercury. Special care is taken to perform adequate vitrectomy at the planned needle entry sites, nasally and temporally, to prevent vitreous entanglement during haptic docking with the 27 gauge needles. Triamcinolone is injected to visualize residual vitreous strands. MVR port is sutured with 7-0 vicryl. Scleral fixation is initiated. This is a modified Yamani technique, and the leading haptic of the 3-piece IOL is docked into the bevel of the 27 gauge needle. While injecting the IOL, the injector is rotated clockwise and then counterclockwise as the optic is being delivered to prevent rotation of the IOL, as you can see in the video. The trailing haptic is then initially externalized through the sclera, then docked with the help of microforceps into the 27 gauge bevel needle. Once these the haptics are externalized, they are flanged using a low temperature cautery device and tucked into scleral tunnels beneath the conjunctiva. Pupillary cerclage is then initiated using a 9-0 Prolene suture in a baseball-style continuous pattern. The iris edge is grasped in the superior quadrant. The needle is passed through the iris tissue, wrapped, and 6 to 8 bites are taken per quadrant. Viscoelastic cannula is used to dock the needle at the exit site. More limbal ports are created at the 6 o'clock, 3 o'clock positions to facilitate passing of the needle through these ports. The process is repeated in all quadrants, and special care is taken to avoid penetration of the corneal stroma at entry by gentle needle wiggling, and visco cannula helps to prevent trauma at the exit sites. Once the suture ends are both externalized from 12 o'clock, they are tied using 3 throws over a curved tying forceps. A round, well-centered pupil of about 4 to 5 mm is then achieved. Microforceps are used for fine adjustments once roundness and centration are satisfactory. These sutures are then cut with micro scissors. Pars plana infusion is sutured using a 7-0 vicryl. And a 10-0 nylon limbal suture is placed. The remaining limbal ports are then hydrated through stromal hydration. An air bubble is left in the anterior chamber to maintain intraocular pressure and aid wound sealing. This patient managed to regain useful vision, achieving 6/9 1 week post-operatively from hand movements. Thank you very much. MashaAllah, very skillful demonstration of anterior segment reconstruction. So I congratulate our chairperson that his torch is being held by able hands. Dr. Mazri is asking me to comment. I said, I think it would be better if he comments himself. So it was a nice surgical procedure done, nicely placed scleral fixation, which is definitely a challenge. And cerclage is also not a very easy thing to do.
I was telling Dr. Mazri that at times I feel that the younger generation is doing the surgery much better than we did. So alhamdulillah, it was a nice surgery. So now Dr. Mazri is going to talk about microspherophakia management. Yeah. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. After having these Excuse me, two, Dr. Mazri. Before Dr. Mazri starts, I just want to comment that, in fact, Dr. Ziaul Mazri has introduced a new subject in ophthalmology, and you are going to see that he has amalgamated surgical procedures with poetry. So now you are going to see poetry in all his surgical procedures. So let's see what Dr. Mazri has to present today. तो वो तो अभी दो ही नज़में हुई हैं, एक फेको मैजिक और एक मेक योर ट्रैप सेफ। तो इसमें तो ज़रा हम दिल की बात करेंगे पहले, फिर आंखों की बात करेंगे। कुछ मेरा ख्याल है जो हमारे ज़माने के लोग थे एफएससी वाले, उन्होंने एक पोइम पढ़ी होगी, ला बेले डैम सेंस मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इट्स अ फ्रेंच वर्ड्स एंड जॉन कीट्स was a poet who wrote this poem. So I have, this poem is derived, the idea of this poem is derived from that poem. It's not a translation, but it's also La Belle Dame Sans Mercy in Urdu. वो संग दिल बेरहम जालिम नाजनी, वो संग दिल बेरहम जालिम नाजनी, ला बेले डैम सेंस मर्सी, थी खूबसूरत पुरकशिश और दिल नशी, वो जादू उसके हुस्न का था बाकमाल, और उसकी ज़द से दिल का बचना था मुहाल, थी सादगी और भूलपन उसका शार, यूं ही दिलों को लूट लेना करके वार, वो पेश आए जुल्फे जाना के असीर, वो कासा लेकर दीद का फिरते फकीर, वो सोख्ता जां चाक दामा जरजरू, हैं करते अपने आप ही से गुफ्तगू, और उनके बरबत पर यही एक साज है, बस उनके होंठों पर यही आवाज है, और क्या भला आंखों के माहिर का बना, और क्या हुए दो नैन जिन पर वो मरा, और क्या भला आंखों के माहिर का बना, और क्या हुए दो नैन जिन पे वो मरा, एक मजहरी तन्हा नहीं है दश्त में, है कितने फिरते जख्म खुर्दा गश्त में, वो दिल गिरफ्ता दिल शिकस्ता आशिकां, हैं यूं जुबाने हाल से महवे फुगां, वो संग दिल बेरहम जालिम नाजनी, सी खूबसूरत पुरकशिश और दिल नशी, ला बेले डैम सेंस मर्सी। So the contents of this presentation are that we will have the introduction of microspherophakia, and then the clinical presentations, and we will just go through the management approaches, and we'll review the complications and risks, and then I will show you a few video clips, and we will see what is being to be offered in future in this regard. So what is microspherophakia? It is a rare ocular condition जिसमें लेंस जो है वो फुटबॉल जैसा होता है, रग्बी बॉल जैसा नहीं होता. You know the rugby ball which Americans play with the name of football? It's a disc shaped. So normal crystalline lens is disc shaped. तो अगर वो बिल्कुल गोल हो जाए टेनिस बॉल की तरह तो दिस इज माइक्रोस्फीरोफेकिया, और उसका साइज भी छोटा होगा, और यही बात विल इंड्यूस वेरी हाई मायोपिया. और बाद औक़ात बड़े साइलेंटली माइक्रोस्फीरोफेकिया के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं और उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जस्ट हाई मायोपिया होता है. तो दैट्स वेयर यू नीड टू सेंसिटाइज योरसेल्फ कि आप उनको स्ट्रेट लैम्प पे देखते हैं और आई के करेक्टर्स देखते हैं तो आपको अचानक रियलाइज होता है कि इस लेंस की शेप नॉर्मल नहीं है, खासतौर पर जब डायलेट करके देखते हैं तो. और ये डॉक्यूमेंट तो 20वीं सेंचुरी में हो गया था. रेयर कंडीशन है लेकिन कोई इतनी भी रेयर नहीं है, महीने में 1-2 केस तो ओपीडी में आ ही जाते हैं.
कंजेनिटल है मेनली, और मॉर्फनाइड और व्हील मर्चेसानी सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। और इसका फीचर ये है कि इसमें जोन्यूल्स भी वीक होते हैं। तो सिर्फ माइक्रोस्फीरोफेकिया नहीं होता, अल्टीमेटली दैट लेंस डिसलोकेट्स एज वेल, सबलक्सेट्स एज वेल। ये अगर हम मुझे कहा जाए कि एक सिंगल स्लाइड प्रेजेंटेशन करें माइक्रोस्फीरोफेकिया पे, तो दिस स्लाइड इज एनफ। कि इसको अगर हम गौर से पढ़ लेंगे तो हमारी तकरीबन सारी मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगी। कि ओरिजिन कंजेनिटल, कंजेनिटल जब ओरिजिन होगी तो उसमें एक हिडन चीज एसोसिएटेड है, इट विल बी प्रोग्रेसिव एज वेल। एक्वायर्ड में ट्रॉमेटिक होगी, जैसे अभी हमारे 2 यंग डॉक्टर्स ने हमें दिखाया। और अगर ट्रॉमेटिक है तो वो जितनी भी है उसकी सिवियरिटी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कि अगर एक क्वाड्रेंट में लॉस है और जोन्यूल्स वीक हैं तो माइल्ड, और 2 में हैं तो मॉडरेट, और 2 से ज्यादा हैं तो सीवियर। लेकिन अगर आपको कंजेनिटल मिलेगी तो दूसरी चीज हमने उसी से अखज कर ली कि वेदर इट्स प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव। ट्रॉमेटिक सबलक्सेशन जितनी भी होगी विल बी नॉन प्रोग्रेसिव, और कंजेनिटल चाहे आपने बिल्कुल माइल्ड स्टेज पे ही उसको डिटेक्ट कर लिया, बट इट इज गोइंग टू बी प्रोग्रेसिव। सो दिस पॉइंट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। फिर उसकी जो लेंथ की डेंसिटी है, आमतौर पर जब कंजेनिटल आप डिटेक्ट करेंगे तो वो अर्ली डिटेक्शन होगी तो लेंस सॉफ्ट होगा, जबकि ट्रॉमा में एज के हिसाब से, जिस एज पे ट्रॉमा हुआ है उस हिसाब से न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस उसमें मिलेगी आपको। और जितना लेंस डेंस होगा उतना ही चैलेंज और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वीक जोन्यूल्स के साथ उसको निकालना और रिहेबिलिटेट करना और मुश्किल होगा। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है, ये जो क्राइटेरिया हमने तय किए हैं, ये आपकी डिसीजन मेकिंग को कैसे मुतासर करते हैं। माइल्ड सबलक्सेशन लेस देन 1 क्वाड्रेंट, कंजेनिटल है, माइक्रोस्फीरोफेकिया है, और पेशेंट -8 से 6-9 पढ़ रहा है। अब क्या करें? यू जस्ट ऑब्जर्व, वेट। हम इंटरवीन तभी करेंगे चूंकि इसमें सर्जरी में रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें हम विट्रियस फेस भी शायद ना बचा पाएं, और इन पेशेंट्स में रेटिना में ब्रेक्स भी होती हैं, तो हम सिंपल मॉनिटरिंग करेंगे। इंटरवीन का फैसला कब करेंगे? एक तो प्रोग्रेसिव मायोपिया और एक डिप्लोपिया एंड कंफ्यूजन जब उसके साथ होगा प्रेजेंटेशन के साथ, तो वो आमतौर पर मॉडरेट जब हो जाएगी सबलक्सेशन, तो लेंस का जब एज विजुअल एक्सिस के आसपास आने लगेगा तब पेशेंट को वो प्रॉब्लम शुरू होगा। या फिर उसकी जो लेंस के बजाय सेंटर रिफ्रैक्ट करने के, जब उसकी साइड से रिफ्रैक्शन शुरू होगी तब प्रॉब्लम होगा। तो दैट विल बी द टाइम टू इंटरवीन। फिर इसको एक्सेसिव वेट करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी सबलक्सेशन बढ़ती जाएगी, मॉडरेट से सीवियर की तरफ जाएगी, उतना ही पिपिलरी ब्लॉक का एलिमेंट और रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर आपने एक्सेसिव डिले कर दिया, एनक वैनक से करेक्ट करते रहे उसको, तो देन यू विल बी डीलिंग विद 2 कंडीशंस। 1 यंग ग्लाकोमा, और बार बार पिपिलरी ब्लॉक होने से जो एंगल है वो भी सारा चिपक जाएगा। सो नॉट टू अर्ली बट नॉट टू लेट, हमने उसको मॉडरेट टू सीवियर पे मैनेज करना है। दूसरा भी कि ये जो मैं प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने बहुत कॉमन ये एरर देखी है, जजमेंटल एरर, या फिर जो फेको का मिजाज है
वो कहाँ लगाने देता है घंटा डेढ़ एक केस पे। आप 10-15 मिनट में केस करने के आदी हों तो इस तरह के चैलेंजिंग केस के लिए एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोग्रेसिव है तो आप आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि हमने उसको हुक्स वगैरह लगा के यूट्राटा की मदद से रेक्सिस करके इरिगेशन एस्पिरेशन कर ली, लेकिन फिर वो टेंशन रिंग भी डाल दिया। अब इट इज अ वेल सेंटर्ड बैग, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट है सबलक्सेशन अभी, तो उसने उसको फुली एक्सटेंड कर दिया, टॉट कर दिया बैग को। तो अब उसमें लेंस डालना तो कोई मसला नहीं है। अब आपका असिस्टेंट भी आपको कहता है, आपके दिल में भी ख्वाहिश होती है कि मैंने इतना नाजुक काम कर लिया है कि सबलक्सेशन को बढ़ने नहीं दिया, और हुक वगैरह की सपोर्ट लेकर मैंने रेक्सेस भी कर लिया, इरिगेशन एस्पिरेशन भी कर ली और बैग को डिस्टेंड भी कर लिया। तो टेंडेंसी क्या है, एरर यहां पे होती है कि ये ठीक लग रहा है, बस लेंस डाल दो, डाल दिया, पेशेंट अगले दिन 6-6 भी हो गया। अब होगा क्या? दैट्स व्हाई दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रेसिव disease. We know with the pathophysiology and with the history and with our knowledge that the diagnosis of this microspherophakia with the marfanide kind of subluxation or Weilmer-Chisani problem, it's a progressive problem. तो उसकी जब प्रोग्रेशन होगी तो आपकी सर्जिकल इंटरवेंशन से तो नहीं रुकेगी। प्रोग्रेशन कहाँ होगी? प्रोग्रेशन होनी है जोनियल वीकनेस के साथ। तो ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स गिरेगा पीछे। आपका जो रिंग है, जो आपका लेंस है और जो बैग है, ये पूरा डिसलोकेट होगा, और उस वक्त उसको निकालना और डिसलोकेटेड रिंग को निकालना, इट्स अ बिग चैलेंज। ये डिसलोकेटेड आईओएल से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो उस सर्जन ने अपने वो जो 30-40 मिनट बचाए, उसने इस पेशेंट को एक थ्रेट को एक्सपोज कर दिया, जो अगले 5 से 10 साल में, 2 साल में, डिपेंडिंग अपॉन द लक ऑफ द पेशेंट, वो मैनिफेस्ट करेगा, और देन इट विल बी अ रियल हेडेक। तो फिर क्या करें? अगर हमें ये वाली चीजें मिल जाएं कि कंजेनिटल है, प्रोग्रेसिव है, मॉडरेट टू सीवियर है, डेंसिटी सॉफ्ट है, तो मैं तो ये करूंगा कि रेक्सिस करूंगा हुक्स लगा के जहां जरूरत पड़ेगी, केयरफुल आईए करूंगा। ये क्यों? द पीपल गो फॉर लेंथेक्टमी, दे ऑलवेज चैलेंज कि जी लेंथेक्टमी क्यों नहीं कर देते। इंट्रा बैग इरिगेशन एस्पिरेशन के अलावा जितनी भी टेक्निक्स हैं, नामुमकिन है कि उसमें लेंथ मैटर डिस्पर्स ना हो, वो लाजमन विटियस में डिस्पर्स होगा। वो आगे से फिर हमारे जो रेटिना वाले भाई हैं कहते हैं जी क्यों ना पार्स प्लाना ही कर दें। भाई यंग एज में पार्स प्लाना विट्रेक्टमी कर देना ये कोई इतनी मजे की बात तो नहीं है। पार्स प्लाना विट्रेक्टमी करना इज इंड्यूसिंग अ न्यू काइंड ऑफ anatomy or the inviting new troubles for that young man. तो इसलिए आइडियल ये है कि उस केस में हम रेक्सिस करके केयरफुल उसको आईए कंप्लीट करें, लेकिन वहां आप खुश हो के लेंस बैग में डाल के फारग होने की बजाय नाउ यू शुड बी वेल वर्स्ड विद स्क्लेरल फिक्सेशन एंड हैप्टिक टकिंग टेक्निक्स, जिनमें से चंद एक मैं आपको अभी दिखाऊंगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मायोपिया हो सकता है, डिप्लोपिया, कंफ्यूजन हो सकता है, और ऑन एग्जामिनेशन आपको नजर आ सकती है सबलक्सेशन और कंफ्यूजन हो सकता है पेशेंट को। डायग्नोसिस में आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, डायलेटेड फंडोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लेंस की पूरी जो मॉर्फोलॉजी है उसको स्टडी कर सकें। और इमेजिंग मोडेलिटीज में इवन टोपोग्राफर कैन पिक इट। अभी कोई इमेज आपको शायद हम दिखा सकें कि टोपोग्राफर भी आपको माइक्रोस्फीरोफेकिया का डायग्नोसिस दे देता है। एंटीरियर सेगमेंट ओसीटी कैन हेल्प, कि उससे आप उसकी लेंस की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाती है। और अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी इज अ वेरी गुड टूल एकेडमिकली। अगर ये चीजें नहीं भी हैं तो यू कैन मेक द डायग्नोसिस एट स्लिट लैंप।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने जो एसोसिएटेड कंडीशन है उनको रूल आउट करना है। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में लेंटिकुलर मायोपिया, शैलो एसी और इरिडोडोनेसिस, और हमारे जो टूल्स हैं, और हमें इसमें एसोसिएटेड ग्लाकोमा बड़ा कॉमन है, इसलिए टोनोमीट्री और या डिजिटल फीलिंग उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल टोनोमीट्री। मैनेजमेंट अप्रोचेस में अगर मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, मैंने कहा था अगर हम वो एक ही स्लाइड डिस्कस कर लें तो काफ़ी है। सो रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज वी हैव मेड अ इजी फॉर अस कि अगर तो माइल्ड है और सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर है, पेशेंट को क्लिनिकली भी कोई मॉडरेट टू सीवियर पे डिग्री पे नहीं आया और उसको कंफ्यूजन, डिप्लोपिया और ग्लेयर और हेलोज नहीं आ रहे, तो इट्स बेटर टू मॉनिटर बट एजुकेट द फैमिली एंड द पेशेंट कि आपको ये कराना पड़ेगा और आपके लिए 6 मंथली एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। कहीं वो ये फीलिंग ना लेके चले जाएं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कोई मसला नहीं, हूँ ठीक है, और अगले 10 साल आए ना, और जब आए तो विद पेपिलरी ब्लॉक ग्लाकोमा आए, दैट्स अ वर्स्ट प्रेजेंटेशन यू कैन हैव। और पेरेंट्स की और पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखें कि पेपिलरी ब्लॉक हो रहा है और फौरी तौर पर अभी आप उसकी आगे मैनेजमेंट में नहीं जा सकते, तो इट्स वाइजर टू गो फॉर अ यैग पीआई कि कम से कम आप उसको पेपिलरी ब्लॉक को अवॉइड कर दें, एवर्ट कर दें, और पेशेंट जो है वो बार बार पेपिलरी ब्लॉक होने से उसके पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी ना बने। और जो इंटरवेंशन है, नॉट टू अर्ली बट नॉट टू लेट, वो भी हमने उसी स्लाइड में डिस्कस कर लिया था। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंडिकेशंस भी हमने डिस्कस कर ली हैं। सर्जिकल टेक्निक में वो भी हमने तकरीबन डिस्कस कर ली है कि अब आपकी रह गई हेप्टिक टकिंग और स्क्लेरल फिक्सेशन टेक्निक्स। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी इंपॉर्टेंट है। इनमें भी, इन पेशेंट्स में पोस्ट ऑपरेटिव, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर यंग, सो दे आर रिएक्टिव, तो यूवेआइटिस और ग्लाकोमा को ज्यादा लंबा अरसा आपको ऑब्जर्व करना पड़ सकता है। सर माशाल्लाह बैठे हैं हमारे पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी के सुरखेल, तो ये वो टॉपिक है जो कि पीडियाट्रिक और अडल्ट दोनों के लैंडस्केप में आता है, तो दोनों से वेल वर्स्ड बंदा ही इनको टैकल करे तो बेहतर है। और फिर जाहिर है बायोमेट्रिक इश्यूज भी हैं, जितनी यंग एज में करेंगे उतना ही एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप जो लेंस डालेंगे उसने तो बाद में बदलना नहीं है। और सर्जिकल मैनेजमेंट प्लान में मैंने लेंसेक्टमी को पहले ही प्रेफर नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि आप हत्तुल इम्कान कोशिश करके हुक्स वगैरह यूज करके कोशिश करें कि छोटा सा रेक्सेस हो जाए और इन द बैग आप उसको एस्पिरेट कर लें तो आइडियल है, लेकिन अगर करनी पड़े तो दिस इज अनदर ऑप्शन। आईओएल कंसिडरेशंस में हमें आईओएल ऐसा लेना है जिसको हम सल्कस में प्लेस कर सकें, और उसके लिए जो आजकल हम लेंस यूज कर रहे हैं वो दो हैं। एक तो वो ही है ओल्ड इज गोल्ड एल्कॉन मल्टी पीस आईओएल, ओवरऑल 13 मिलीमीटर, स्फेरिक ऑप्टिक, राउंड एजेस। और इसलिए मैंने वो पूछा था पार्टिकुलर रेनर का कि आपको ये जो सिलिकॉनाइज्ड डाइज भी हैं उसमें भी बेहतर है कि आप इस तरह सिंगल पीस लेंस की बजाय आप मल्टी पीस लेंस मंगवा लें, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस। इन केसेस में जितनी मर्जी आप एहतियात करें, ये चैलेंजेस हैं, हर दफा आप बैग में नहीं डाल सकेंगे सिलिकॉनाइज्ड डाई में। तो अगर आपको सल्कस में डालना पड़ा तो सिंगल पीस स्क्वायर एज आईओएल वहां पे शेफिंग करेगा एंटीरियर चैम्बर लेंस की तरह, और विल नॉट बी अ वेलकम थिंग पोस्ट ऑपरेटिवली। तो उन केसेस में भी मल्टी पीस आईओएल रिकमेंडेड है। दूसरा आईओएल जो रिसेंटली आया है वो कोवा का है, जापानीज, उन्होंने एक मल्टी पीस आईओएल बनाया और उसमें एक नया मटेरियल है पीजीएफए, पीवीडीएफए, पीवीडी से हूं नहीं भूलता, पॉलीविनाइल हो जाएगा वो भी, अगली दफा अगली प्रेजेंटेशन में डी से भी याद आ जाएगा। तो वो उसकी ब्यूटी ये है कि वो रिजिलियंट है। और आपको पता है रेजिडेंट्स को जो एक्रिस ऑफ मल्टी पीस है उसके हेप्टिक किस चीज के बने होते हैं?
PMMA इज द राइट आंसर। ये रेजिडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि वो PMMA के बने हुए हैं, वो उनका रंग तो प्रोलिन जैसा है बट दे आर PMMA, so that's why they break too often in tucking and externalization procedures. So the beauty with this COVA is that the haptics are with that PVD FA material, something like that. So they are very resilient. उसको पूरा आप 90 डिग्रीज भी बेंड कर दें तो वो वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल शेप में. सो दे आर वेरी गुड फॉर सच केसेस कि उसको बांधना भी आसान है, उसको नीडल से एक्सटर्नलाइज करना भी आसान है, फोर्सेप्स की मदद से भी उसको टक करना आसान है. चेयरमैन को तो घंटी नहीं ना बजा सकते आप. अगले सेशन वाले आ गए हैं कोई उम्मीदवार? सर जी तुसी तो मेरे नाल होना, तुसी अगलियां नाल मिल गए हो. वीडियो दिखाओ. ये मार्फोनाइट सबलक्सेशन है और चूंकि जैसे मैं कहता हूं वी नीड टू बी क्लियर विद आवर प्लान्स, तो सबसे पहले हम फिक्सेशन साइट्स फैशन करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आई पे ये मैनिपुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं. सो इफ द नेक्स्ट सेशन क्लेमेंट्स हैव कम, द न्यूज़ फॉर देम इज वी गॉट द सेशन द हॉल 15 minutes delayed, so we will give them the hall at 10:15, 11:15. उससे पहले वो हमें चैलेंज ना करें. तो ये देखें मैंने बहुत सारी सबलक्सेशन है, ये इसमें वो बैग बचाने की कोई सूरत नहीं है, लेकिन मैंने पूरी एहतियात से छोटा सा एक्सेस करके इरिगेशन एस्पिरेशन मुकम्मल कर ली है. और दिस वाज अ काइंड ऑफ अर्लियर वर्जन जिसमें मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ. ये भी याद रखें क्योंकि इसमें सीवियर सबलक्सेशन है, जब 180 डिग्री से ज्यादा सबलक्सेशन है तो उसमें ये CTR विल नॉट वर्क, तो इसलिए दिस इज हाउ यू लर्न. तो वो फिर मैंने डाल के निकाल लिया है. और इन द एंड मैं क्या करता हूं कि उस बैग को पूरा फोर्सेप्स की मदद से लपेट के तो बाहर निकाल देते हैं. तो इट गिव्स यू 100% रिमूवल ऑफ लेंस मैटर विद दिस लिटिल पेशेंस. तो ये सूचर फिक्सेशन है क्लासिकल, जिस तरह हम नीडल की मदद से करते हैं. पहले हमने प्रोलिन सूचर गुजार लिया है और फिर उसके हैप्टिक्स को बांध के लेंस को इंसर्ट करके उनको दोनों तरफ टाई कर देंगे. और चूंकि हमारे पास दोनों स्ट्रेट नीडल्स हैं तो इसलिए फिर एंड में हम एक नीडल को बेंड कर लेते हैं और उसको द सूचर इज टाइड टू इटसेल्फ. और इन केसेस में विट्रेक्टमी की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है, इवन बिफोर रैक्सिस, ड्यूरिंग रैक्सिस, आफ्टर रैक्सिस, बिफोर आईए, किसी भी लेवल पे आपको विट्रैक्टर की जरूरत पड़ सकती है. तो आपको उसमें शाये नहीं करना, जहां भी जरूरत पड़े वहां उसकी विट्रेक्टमी करके आगे चलें. ये देखें, ये वो चीज है जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये ट्रॉमेटिक है. तो इसमें अगर हमने इसको सक्सेसफुली कर लिया और ये CTR डाल के सेंटर हो गया तो इस केस को हम छोड़ सकते हैं. इसको हम जिस स्टेटस में छोड़ेंगे ये होपफुली फॉर लाइफ वैसे ही रहेगा. तो जेंटलनेस, पेशेंस इज द आंसर. वो जो स्पाइरल रैक्सिस वाली टेक्निक मैंने यूज की है, छोटे से शुरू किया था और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता एनलार्ज कर लिया. और रैक्सिस करने के फौरन बाद अब ना एक और इसमें सवाल बड़ा अहम है कि CTR कब डालें. नॉट टू अर्ली बट नॉट टू लेट, वही यहां भी आंसर है. प्रेफरेबली हम न्यूक्लियस रिमूवर से पहले वाला काम हुक्स की मदद से करेंगे और न्यूक्लियस रिमूवल के बाद हम CTR डाल सकते हैं. एज लेट एज पॉसिबल बट नॉट टू लेट. और फिर आपने स्लो मोशन फेको टेक्निक यूज करनी है. बॉटल हाइट कम कर दें, फेको पावर 50% पे ले आए,
वैक्यूम भी कम कर दें, और योर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर एक्टिव। आप ज्यादा उसको मैकेनिकली तोड़ रहे हैं और पीसेस कर रहे हैं बनिस्बत फेको पार के, ताकि जो जोनियल और कंप्रोमाइज है वो एक्सटेंड ना हो। और अगर आप पिपलरी प्लेन में रहें और कार्निया के करीब फेको ना करें तो आई एश्योर यू आपकी एंडोथेलियम नाराज नहीं होगी, वो आपको टाइम देगी। और फिर फेको को उस तरह यूज करें जितनी नीडेड पावर है उतना ही पैडल को प्रेस करें और दरमियान में रेस्ट देते रहें। सो वी वर एबल टू कंप्लीट इट। नाउ इज द टाइम हैज कम फॉर द CTR। और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह रेक्सेस भी अच्छे साइज का हो गया और इरिगेशन एस्पिरेशन भी हमने अभी कर लेंगे और न्यूक्लियर इमल्सिफिकेशन भी हो गई, तो CTR इम्प्लांटेशन के बाद ये बैग जो है ये बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा और खूबसूरत लगने लगेगा जैसे एक नॉर्मल कैटरेक्ट होता है। फिर हमने कंप्लीट कर ली, तो यहाँ मैंने देखा कि उसका एक प्रॉन्ग थोड़ा सा बाहर था, तो उसको मैंने सिंस की हुक की मदद से रीपोजिशन कर दिया। सो नाउ वी कैन रिमूव द मॉडिफाइड कैप्सूल हुक। और हुक को रिमूव करना भी शुरू में प्रॉब्लम होता है, उसकी कर्व के साथ ही उसको ना रोटेट कर दें लिम्बस के साथ, ऐसे यूं है ना, ऐसे है तो यूं घुमा के बाहर निकाल लें, घुमाते जाएं उसको हत्ता कि वो बिल्कुल लिम्बस के टेंजेंशियली पैरेलल हो जाएगी तो बाहर आ जाएगी। सीधा पुल करते हैं तो इट इज प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गया, ये केस जो है ये मार्फोनाइड है। शी वॉज यंग लेडी और उसने इतना इंतजार किया और उसकी प्रोग्रेशन इतनी स्लो थी कि वो 40 साल की उम्र में हमारे पास आई। तो दूसरी आई में भी उसके एफेकिया था कि वो मैनेज नहीं हो पाया था जिन्होंने प्रीवियस सर्जरी की थी। तो इसलिए मैंने सक्सेसफुल सर्जरी करने के बाद अपनी उस टेम्पटेशन को अब रोका है, जो मैं आपको उस इंपॉर्टेंट स्लाइड में कह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था मैं छोड़ दूं, लेकिन जब आप बार बार एडवोकेट करते हैं तो फिर अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। तो मैंने फिर उसका फिक्सेट किए हैं दोनों हैप्टिक, और इसको हम कहते हैं रिवर्स फिक्सेशन, कि हमने पीसी को उस नीडल की मदद से रेंट कर लिया है और हैप्टिक को एक्सटर्नलाइज कर लिया है दोनों तरफ से, जबकि एसी आगे इंटैक्ट है। तो इसमें हैप्टिक दोनों बैक के पीछे चले जाएंगे और ऑप्टिक एंटीरियर जो कैप्सूल है उसके आगे रहेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्स कैप्चर, और वो हैप्टिक पीछे जाके टेंशन रिंग से पीछे 1.5 मिलीमीटर पोस्टीरियर वहां पे हम टक कर देंगे उनको। तो दिस होल कॉम्प्लेक्स विल बी फिक्स्ड, और जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे हम उसकी विट्रेक्टमी करके केस को क्लोज कर देंगे। तो अब अगर आप गौर करें तो आपको सेंट्रल में रेंट नजर आ रहा है जो हमने खुद इंड्यूस कर दिया है, लेकिन चूंकि वो कंट्रोल्ड है सारा कुछ और हम लेंथेक्टमी के चक्कर में नहीं पड़े, तो इसलिए थोड़ी सी विट्रेक्टमी से हमारी प्यूपिल राउंड हो गई है। ये ट्रॉमेटिक है, तो इसको मैं जरा क्विकली गुजार देता हूं ताकि सर दोबारा घंटी ना मार दें। आपने चैम्बर को डीप कर लिया और इसमें है भी बड़ी माइल्ड सी। अभी आपको ये इंफ्रोटेम्परल है, वहां से विट्रियस प्रोलैप्स भी है थोड़ा सा। तो रेक्सिस करने के बाद फौरन मैंने हुक लेके उस एरिया को स्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद हाइड्रोडिसेक्शन की है, और हाइड्रोडिसेक्शन मैं कहता हूं मल्टी क्वाड्रेंटिक, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ी थोड़ी करें चारों क्वाड्रेंट्स में। और वही फेको वाली टेक्निक जो आपने पिछली वीडियो में देखी है, स्लो मोशन फेको, डिक्रीज बॉटल हाइट, डिक्रीज इरिगेशन रेट, decreased vacuum and less phaco power and more active second instrument. Your non-dominant hand is playing vital role in these cases.
और एक दफा हमने उसको क्रैक कर लिया तो फिर लाइफ आसान हो जाएगी। ये अब पेरीन्यूक्लियस है, तो बार बार हम जेल आ रही है सामने आपके, और मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि बैक को स्ट्रेस किए बगैर चीज़ों को आगे लेके चलते जाएं। तो पेरीन्यूक्लियस को मैंने उठा लिया, और उठाने के बाद दोबारा फेको से उसको एस्पिरेट कर लिया। नाउ द फेको पार्ट इज ओवर। और जब हमने अब निकाल लिया ना न्यूक्लियस, तो कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस हमने भी शायद जोन्यूल्स को दिया होगा, लेकिन अब चूंकि न्यूक्लियस की सपोर्ट नहीं रही, तो वो जो उसका जोन्यूल वीकनेस का एरिया था वो ज्यादा नुमाया हो गया। तो उसको मैंने एक और हुक ला के लगाकर मजीद सपोर्ट कर दिया वहां से। और ये टेंजेंशियल एस्पिरेशन कहते हैं इसको। जब आप आईए करते हैं तो आप सेंटर की तरफ पुल करने की बजाय टेंजेंट कर रहे होते हैं, उसको रेडियली सेंटर की तरफ पुल नहीं करते, उसके पैरेलल पुल करते हैं ताकि जोनियर लाइसिस मजीद ना हो। अब देखें वो वहां से आपको बैक की सबलक्सेशन अब नुमाया नजर आ रही है यहां पे। तो जो ही ये हमारी मुकम्मल हो गई, तो अभी तक मार्जिन और बैग इंटैक्ट हैं, अगरचे वहां से वो फोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीटीआर जा रहा है, और सीटीआर जब प्लेस हो गया तो बैग डिस्टेंड हो गया, और हमने अब मल्टीपीस आईओएल को इंजेक्ट कर रहे हैं, एसी में इंजेक्ट करेंगे, और फिर अपनी मर्जी से मोहब्बत से उसके हैप्टिक्स को अंदर डाल देंगे बैग के। और जब वो सारा कुछ अब विट्रेक्टमी कर रहे हैं। इससे पहले भी एक दफा विट्रेक्टमी की थी, और यहां पे मैंने देखा कि दोबारा थोड़ा सा विटियस आया, तो दोबारा आपने विट्रेक्टमी कर दी। तो इस केस में अब हमें फिक्सेशन की जरूरत नहीं है। अगर हमने सेंट्रेशन अचीव कर ली है, तो वो पेशेंट को 2 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह, अभी तक वो 6-9 है। सो विद दिस वी होपफुली एंड द सेशन। और लेसन यही है कि हमें वेल वर्स्ड होना चाहिए। ये एक और केस है माइक्रोस्फीरोफेकिया का, जिसमें आप देख रहे हैं वो सारा फुटबॉल नजर आ रहा है। तो इसको कोई -20 डायप्टर का मायोपिया भी इंड्यूस किया हुआ था लेंस ने। तो इसको भी हमने इसी तरह करके, और इस केस में चूंकि बिल्कुल क्लियर लेंस था, तो इसकी हमने 360 एनसर्कलमेंट भी कर ली थी सर्जरी से पहले दोनों आईज की, और उसके बाद हमने सर्जरी को टेकअप किया। और अल्टीमेटली इसमें भी चूंकि प्रोग्रेसिव इसकी लक्सेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने सारा कुछ सक्सेसफुली करने के बाद हमने फिक्स कर दिया था लेंस बैग कॉम्प्लेक्स को, टेंशन रिंग और उसके हैप्टिक्स को हमने उसी टेक्निक से सूचर फिक्सेट कर दिया था स्क्लेरा में। तो फ्यूचर डायरेक्शंस में यही आईओएल के अंदर एवोल्यूशन हो रही है। टकिंग टेक्निक्स में नई से नई चीज की कोशिश हो रही है कि ऐसा रिप्रोड्यूसिबल मेथड हो कि जो सारे लोग करें और फेको जैसे एक ही रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट मिले। अभी तक तो वो मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन एक कार्लेवाल लेंस का भी तस्करा सुना होगा आपने, उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरी लाहौर ऑप्थेल्मो में। ही वाज हियर, कार्लेवाल हिमसेल्फ। तो these are the possibilities के new tucking techniques, new IOL designs, and the message is that it needs individualized management, and the surgeon needs to be well versed with all the techniques to meet these challenges. Thank you very much. So La Belle Dame sends mercy. Thank you very much, Dr. Zayal Maziri. It was a very nice presentation. In depth, you explained everything. You have used CTRs very frequently and with excellent results, of course. But I just want to make my younger colleagues a little cautious about the use of CTRs. CTR is an excellent thing to be used, but if and only if you have a proper capsular access. If the capsular access is not good, or if it is not proper, even if it is
a very wide capsular axis. At times the CTR, it goes out, rather it even cuts through the capsule, and then you land in disaster. So please use it very cautiously, but you should be 100% sure about your capsular axis. And you should also be sure that you have put the CTR within the bag. As Dr. Maziri once pointed out during his surgery, that one of the ends was out of the bag, so that may land in disaster. So always be very sure that the CTR is within the bag and the capsular axis is very, very definite. So then you can have excellent results. हाँ, ये असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अडल्ट अगर कैटरेक्ट होगा और उसका वाइट टू वाइट ठीक है तो आई विल गो फॉर द मैक्सिमम। लेकिन अगर माइक्रोस्फीरोफेकिया है तो उसमें आपको छोटा ही CTR डालना पड़ेगा। उसमें आप बड़ा डालेंगे तो वो उसको टीयर कर देगा। लेकिन बात सर की बिल्कुल बजा है कि ये तस्करा करना हम भूल गए थे। आपको ये चूज करना है वाइड टू वाइड डायामीटर से कि इसके लिए कौन सा CTR मुनासिब रहेगा। तो हमेशा हमने बड़े वाले को तरजीह देनी है, बट नॉट टू बिग for the bag. There's one more comment. CTRs, they come in either they are transparent or they are blue in color. So I think for beginners, the blue color is very good because the visualization is very easy. And once you have done a few, then you can use even the transparent ones. I will ask Dr. Hanif Malik to stay on, and let's give the shields to the presenters. आप भी आगे आ जाएं। And the presenters, हमारे please come for a picture as दोनों well. इकलौते स्पीकर आगे आ जाएं। सबसे बड़ा स्पीकर तो 600 है।
Assalamu alaikum. I am Dr. Ijlal Taimur, and inshallah, we will be conducting a quiz competition. There were 8 teams, but today only 6 teams are participating. And the team 1 is Al Shifa, I Trust. Team 2 is PF Hospital. Team 3 is Holy Family. Team 4 is BBH. Team 5 NASCOM, and Team 6 is Foji Foundation. We have 4 rounds. First 2 rounds would be theoretical. MCQs type of questions would be there. There would be no negative marking. In first round, 2 teams would be disqualified. And in this second, अब तो 6 ही हैं, हमें 3 लेके चलेंगे. फर्स्ट में 2 करें या उसके बाद 1 कर लेते हैं, ठीक है. In first round, 2 teams would be disqualified. And in the second round, only 1 team would be disqualified. And in these third and fourth rounds, we would have inshallah 3 teams. And in those rounds, there would be negative marking, and there would be investigations. Every question would be carrying 3 marks. Wrong answer would be resulting into negative marking. And in the fourth round, we would be having surgical videos. We have many surgical videos, but I think we won't be needing those. We may use only 2 videos per team. We will see how this proceeds. So I will show 2 MCQs on one slide so that and yes, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना, जो मार्क्स होंगे ना टोटल फर्स्ट राउंड से जो आखिर में टीम्स जाएंगी, वो सारे कैलकुलेट होंगे. ये नहीं कि लास्ट राउंड का होगा. जो ओवरऑल टोटल होगा फिर उसकी तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी. इसमें ये है कि एक स्लाइड पे 2 MCQ शो होंगे. उसकी रीज़न ये है कि बाज़ कोई MCQ बहुत इजी लगता है तो वो बंदा जल्दी कर लेता है, तो दूसरे में आपको फ़ायदा हो जाएगा बजाय एक शो करें. ठीक है, उसके लिए आई थिंक 1.5 मिनट काफ़ी है 2 MCQs के लिए. ठीक है, 1.5 मिनट या इससे ज़्यादा होना चाहिए. अगर आता होगा तो वो भी आता होगा, नहीं है तो तब भी का कोई वो तो नहीं है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और हमने पूरी ये कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस हम आगे लेके चलेंगे ना वो एक जैसे हों. हर 3 जो टीम्स होंगे ना उनके लिए बिल्कुल एक जैसे हों. एक ही टॉपिक से उठाए हैं. जिसका कोई एक क्वेश्चन इजी बना है तो उसको दूसरा मुश्किल क्वेश्चन दिया है ताकि बराबर हो जाए. ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश तो हमने पूरी की है कि इजी हो, इन्फॉर्मेटिव हो. ऑब्वियसली क्विज है, इसमें थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मुश्किल भी होते हैं, थेरेटिकल से होते हैं ना, क्लिनिकल नहीं होते. अस्सलाम वालेकुम सर. Sir, we have 6 teams participating for this quiz competition, sir. If you say we can introduce the team, sir. Sir, this is Al Shifa I Trust Hospital Team 1. Sir, Team 2 is PF Hospital. Team 3 is Sir Holy Family. Team 4 is BBH. Sir, that team. Team 5 is NASCOM, and Team 6 is Foji Foundation Hospital, sir. Sir, we have 4 rounds. First 2 rounds would be theoretical, sir, comprising of MCQs and few pictures. And in the first round, 2 teams would be disqualified. In the second round, 1 team would be disqualified. In third and fourth round, there would be only 3 teams, and there would be, sir, diagnostics, clinical pictures, as well as surgical videos, sir. And the overall score, sir, would be decide the first, second, and third position, sir. Sir, Dr. Azim and Dr. Huzaifa, they are maintaining the record of this, the points, sir, scores. If you say, sir, we can start whenever you say. Thank you, sir. So we are going to start question number 1. Timer hoga 1 minute 30 seconds. No, you have to write those answers on your sheet for the first 2 rounds. After that, आ गई है कि किस तरह आप लोगों ने लिखना है ऑन दैट शीट. पहले 2 MCQs टाइप है ना, वो आप शीट्स पे लिखेंगे पहले 2 राउंड्स. वो हम चेक करेंगे फौरन और फिर आपको जब आप कहेंगे तब स्टार्ट करें. टाइमर ऑन है. 1 minute 30 seconds. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.
Round one. This is the question number one. Time show हो रहा है. ठीक. वो पड़ी है वैसे. ठीक है. We have last 10 seconds for first two questions. Sir, what do you set कर दें? इसको 10 सेकंड पहले. ये लास्ट 10 सेकेंड्स है. इस टाइमर बाद में शुरू हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, किधर जाना चाहते हैं? अच्छा अच्छा. ये 10 पे मैं चेंज कर दूंगा ना, फिर उसके बाद. ठीक. नेक्स्ट. दिस इज पिक्चर क्लियर है ना?
Next. D option. Topical steroid plus systemic antivirals. Next. ये बार बार मैम क्यों नहीं जगह मिल रही है आपको? अच्छा, कोई इश्यू बता देंगे आपको, कोई मसला हो पूछ लें. लास्ट 5 seconds हैं. नेक्स्ट. लास्ट. Last 10 seconds. Next question. And this is the last slide for round 1. And 2 teams would be disqualified with the minimum score.
ले लेनी है सारी. Last 5 seconds, then we would be having scoring of the teams, and we will wait for 2 to 3 minutes so that the last. Okay, time is up. Please hand over your sheets. अगर मैं सिर्फ कमेंट करूं आपको कि जो आपके 15 सवाल थे उनमें से मुझे सिर्फ 5 आते थे. सो अच्छा, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हमारा ख्याल है कि टीमों को ये जो अगली रो खाली है इसमें बिठा दें. सीनियर हम ही हैं बस. हाँ, ये बिल्कुल 4 टीम्स है ना. they will be eliminated, not disqualified. Sir, the result of first round has been finalized,
And so teams, there would be two teams that carried the minimum marks, and unfortunately they would be leaving the contest. And it is NESCOM, and the second is Holy Family. It is Holy Family and NESCOM. Rest four teams can please come. Yes. आप लोग आगे, सर ने कहा आप आगे आ जाएं सारे जो फोर टीम्स है ना, प्लीज अल शिफा थोड़ा सा डिस्टेंस करके ये दो आपकी टीम है मैम बीबी, आपकी कौन सी टीम? पीएफ eliminate हुई हैं, there is nothing to worry about it. If we would have been sitting on that side, तो शायद हम भी eliminate सर हो ये चुके रखें, होते. आगे टोटल करेंगे. So there's nothing to worry about it, okay? It's just a competition. In first round आप में से किधर हो जाए? एक इधर बैठ जाए, इसमें आए. PF Hospital scored the maximum marks, and then there was tie between Al Shifa and Fauji Foundation. So in the second round, the rules are similar. There would be no negative marking. There would be 10 questions, and only one team would be eliminated, and that would be based upon the total from the previous one. ठीक है. So should we start the second? Sir, start. Please. Round 2. So your time starts now. Question. वही से. Last 5 seconds. Next, please. In the next slide, there would be one MCQ, so only 40 seconds for that. No two MCQs in the next slide. Next slide, please. Take question.
Last 5 seconds for this one. Next, please. Okay, time. Next. Option A है aflibercept resulted in the faster resolution of hemorrhage. Second option B, आप देख लें इधर से यार. इधर से देख लें मैम. Last 10 seconds. Next, please. This is the last question of this second round. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है तो 40 सेकंड 20 रहते हैं. Last 5 seconds. Oh, the time is up. Please hand over your sheets. In the there was not even a there was only one question that was not from 10th edition of the Kansky. Every question in the first 2 rounds from 10th edition of the Kansky, and everything is included in that. If you have any doubt, you can check the answers as well. Okay, only one team would be eliminated in this round.
the score for this second round has also been finalized. Only one team is being eliminated in this round, and that is BBH. So better next time. So we have three teams. Number 1 Al Shifa, number 2 PF, and number 3 Fuji Foundation. So in next two rounds, in third round and fourth round, there would be negative marking for wrong answers, and each question carries 1 mark. Oh, sir, judges. Sorry. So we didn't require the additional questions. So, sir, proceed kare, sir. In this round, we will show you, for example, in a clinical picture, you have to give accurate diagnosis, even the stage of the disease, and rest of the questions would be asked afterwards. So, अभी time लगा इसमें ठीक है 2 minutes देंगे. So this is for team 1, and you can see that picture, and you have to give the diagnosis. सर साथ स्कोर कर लीजिएगा. माइक दे रहे ठीक है. अभी आप टाइम देते हैं जब ये माइक आता है आपके पास. पेशेंट डायबिटिक है, 55 एज है. ठीक है. तीसरा Clinically significant macular edema, diabetic macular edema. अच्छा, आपको मैम समझ आ रही है? जो आप इस पिक्चर को देखेंगे, डायबिटिक पेशेंट है, 55 इयर्स ऑफ एज है, प्रेजेंटेड विद सडन लॉस ऑफ विजन था. अब आप इसको देख के डायग्नोसिस अपनी बताएंगे. जब वो बता लेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन डायग्नोसिस है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. ठीक है, क्लियर है? तो 2 मिनट्स आपको दिए हैं इस चीज के लिए. आप जब आप कहते हैं हम स्टार्ट करें, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे दें, फिर ताकि आपका दूसरे क्वेश्चन पूछें. Non-proliferative diabetic retinopathy with clinically significant macular edema. ठीक है. इसके अलावा कोई अप्रिशिएट कर रहे हैं कोई चीज़ें? ये तो ठीक है, आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेज भी बता दी. इसके अलावा कोई चीज़? Hard exudate circum. ठीक है. सर NPDR विद क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा, और साथ सर डिस्क edema. यस सर. नॉट वेरी क्लियर सर. इट हैज ब्लर्ड डिस्क मार्जिन, तो ये स्वॉलन थी सर, तो हमने डायबिटिक पेपिलोपैथी भी साथ ऐड किया था सर इसमें. तो फिर सर हाफ मार्क्स पहले क्वेश्चन के दें आप, जैसे आप. Sir, I said disc edema. I said that. और डायग्नोसिस चाहिए ना, एडिमा बताया आपने. ठीक है, Disc edema से diabetic papilloma. 0.75 करें. ठीक है मैम. उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो इसमें नेगेटिव नहीं हुआ आपका. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटिक पेपिलोपैथी. 2 रिस्क फैक्टर्स बता दें. Hypertension. ठीक है. इट इज नॉट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटिक पेपिलोपैथी. सर अभी जिस तरह इन्होंने बताया, इसमें नेगेटिव करने की जरूरत है. आप प्लीज जो क्लियर आपको आंसर हो वो बताइएगा, फिर नेगेटिव करना पड़ेगा हमें. 2 रिस्क फैक्टर्स है. फिर आपके अगला क्वेश्चन लास्ट रहता है, टाइम पूरा हो रहा है. Poor glycemic control. Poor glycemic control. यस, एक तो हो गया. ठीक है. And, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करें 5 सेकंड्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे. age. नो, एक हाफ पॉइंट तो उसमें सर, आधा आंसर. ठीक है सर. एक स्मॉल कप टू डिस्क रेशो. ठीक है. नंबर 3 इज डिस्क्राइब फाइंडिंग्स ऑफ रोटेट क्लिनिकल ट्रायल. रोटेट क्लिनिकल ट्रायल की फाइंडिंग्स आप बताना चाहेंगे? नेगेटिव मार्किंग है हर क्वेश्चन के साथ, स्किप करें. ठीक है सर. तो पहला क्वेश्चन, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है. इसी तरह फंडस फोटोग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन डायग्नोसिस,
फिर आपको नेक्स्ट आपसे पूछेंगे, प्लीज जो आंसर गलत नहीं बताना आपने, जो आपको सही लगता है आप वही बताइएगा, ठीक है जी। इसमें मैम 2 मिनट्स ही रख लें, टोटल 2 मिनट्स, बस 2 मिनट स्टार्ट कर दें। ये देखिएगा पिक्चर्स बहुत क्लियर नहीं है, ये एक्चुअल पेशेंट्स की पिक्चर है सारी, ये खुद ही ली हुई है। क्वेश्चन 1 इज डायग्नोसिस। टोटल 2 मिनट्स हैं, आपने जो आंसर देना है दे दें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस पूरे हो सकें। सर डायबिटिक पेशेंट है, प्रेजेंटेड विद सडन लॉस ऑफ विजन, बायलैटरल फाइंडिंग्स थी, एक आई की आपके सामने है, ये आपको प्रेजेंट किया लेफ्ट आई। ठीक है सर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रही है इसलिए। पहला डायग्नोसिस क्या है इसकी? High risk PDR. High risk PDR. Okay, this is high risk PDR. ठीक है। Question number 2. What are the 3 characteristics of high risk PDR? जिसको डिफाइन करते हैं आप। गलत जो भी पॉइंट होगा उसको माइनस होगा। पहला ठीक है। Any NVE with the vitreous hemorrhage. जोर से बताएं मैम। Any NVE associated with the vitreous hemorrhage. Any NVE or any NVD? NVE. NVE. Okay, second बताएं आप। That is any NVD that is associated with vitreous hemorrhage. आगे बताएं। NVD of 1/3 disc area or more. जी। NVD of 1/3 disc area or more. Okay. Third one. NVE of half disc area or more. NVE greater than half disc diameter. With vitreous hemorrhage. Yes, with सर 3 पार्ट्स में से एक आंसर ठीक था, 2 नहीं थे, तो इसमें सर वो उसके अकॉर्डिंगली थी। एक गलत था वैसे तो गलत ये तो इसका एक हाफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ योसेमिटी एंड राइनी ट्रायल? It compared the faricimab with the aflibercept and showed no difference between the two drugs. ठीक है सर। Okay, good. So we are proceeding with the third team. Time of taking. Diagnosis पहला क्वेश्चन है, फिर आगे आपसे पूछेंगे। सेम डायबिटिक पेशेंट है, बाकी तो क्लियर है आपको हर चीज में। Advanced diabetic eye disease. ठीक है, डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक बताइए। 3 फीचर्स दैट डिफाइन एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज। Tractional retinal detachment. Yes. Neovascular glaucoma or rubeosis and vitreous hemorrhage. Persistent vitreous hemorrhage. Vitreous hemorrhage or persistent vitreous hemorrhage? Persistent vitreous hemorrhage. 0.75 sir, complete. Vitreous hemorrhage is not in the definition. ठीक है। Okay. Question number 3, what are the findings of protocol AB for diabetic patients? नेगेटिव मार्किंग अगर आपने उसकी फाइंडिंग्स उस तरह लिखा। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, स्किप कर रहे हैं, ठीक है मैम, स्किप कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विद फॉर अल शिफा आई ट्रस्ट। What is the name of this device? Ahmed glaucoma valve. ठीक है सर, पहला पार्ट। सेकेंड इसकी is it valved or non-valved? ठीक है। What is the diameter of this Ahmed glaucoma valve? Third question. Wrong पे negative marking है। I'm not diameter. Okay, skip कर दिए सर। Second team. PF hospital. What is the name of this device? Bowled glaucoma valve. ये अभी नई एडिशन में नहीं आ गया है, ये एडिशन हो गया है। Okay, this is wrong. This is Paul. Is it valved or not? Non-valved.
Yes, it is valveless. एक ठीक हो गया. And what is the diameter of this? No, sorry. Okay, ठीक है, skip कर दिया सर. चलिए, third. Bare well. अब रह ही वही गया था इसमें. ठीक है. ठीक है. Is it valved or not? Not valved. ठीक है. What is the diameter? अंदाजा रॉन्ग नहीं करेंगे, वैसे बताएं. बताइए क्यों नहीं रहा? वैसे पूछ रहे हैं. मैं स्किप तो कर चुके हैं सर. मेरे पास तो लिखिए 250 मिलीमीटर स्क्वायर और उसके अलावा 350 मिलीमीटर स्क्वायर, दो इसके आते हैं साइज. ठीक है. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो अल शिफा, नेम दिस इन्वेस्टिगेशन. FFA. पूरा नाम बताएं. Fundus fluorescein angiography. ठीक है. What is the sign that is being shown in this picture? Sign and disease in this part आपने बताना है. Central CSCR and the sign is smokestack या ink blot, दोनों इसके signs. नहीं, ये कौन सा साइन है? Smokestack. हाँ, तो ये वाला बताएं. ठीक है. 2 नंबर 3 what is the, क्योंकि ये इजी था ना तो क्वेश्चन हमने रखा है इसलिए. तो डोज जो है पीडीटी की, what is the dose of PDT in CSCR? फ्लुएंस आपने बतानी है, डोज भी बतानी है. Half the dose होती है जो हम जी जी, normally वही use. डोज कितनी होती है? गलत आंसर बताने पे नेगेटिव होगा, बताना चाहें तो बता सकते हैं. Like numerical value जो उसकी है. जी जी, वैल्यू उसमें फ्लुएंस, जाउल्स, इस तरह. ठीक है, स्किप करें. ओके सर, पे नेक्स्ट. PF Hospital, you may please name this investigation. ICGA. Right. What are the two classical indications of requesting or performing ICGA? PCV and RAP. Polypoidal choroidal vasculopathy. Yes, ठीक है, And good. retinal angiomatous. दोनों ठीक होंगे. Question number 3 is what are the phases of ICGA? जो phases हैं with time बताना है आपने. कौन सी phase किस time से किस time तक है? Pre-arterial, arterial, AV, choroidal. वो तो FFA की phase बता रही हैं आप. चलें इसमें Skip कर दें. अरे ठीक है, नेगेटिव करना है. ठीक है, चलें नेक्स्ट टीम. अर्ली मिड और इसमें होता है ना लेट मिड, वो एफएफए की फेजेस है ना. ठीक है. नेम दिस इन्वेस्टिगेशन, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल. Optical coherence tomography of the macula. Okay, question number 2 is what is the sign that is being shown and what is the pathophysiology of that? The arrowhead, Yes, just the जो एरोड हमें ये बनाया हुआ है. outer retinal tubulation. Yes. उसकी वजह क्या होती है? और तो हाफ मिलेंगे आपको. ठीक है, 0.5 इसमें. तो क्वेश्चन नंबर 3, what were the recommendations of AREDS 2 for starting antioxidant supplements? जो इंडिकेशन जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो 5 हैं. 3 तो बताएं. नहीं देना आंसर. कोई एक इंडिकेशन भी आप देते हैं सारा दिन, जेनोवेट G+, कोई एक तो पता है. ठीक है. Dry AMD. नहीं, उस AMD के अंदर क्या इंडिकेशंस हैं, किस में बेनिफिट जाता है? Geographic atrophy. ओके, यस. चले 5 थी. चले यार, इसमें तो फिर नहीं. ठीक है, इसमें तो पॉइंट नहीं बनता आपका. नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ना वो ये वैसे पिक्चर लगाई है, ये फेकोमल्सिफिकेशन के होंगे एक जैसे लेवल के. ठीक है. तो अल-शिफा के लिए है व्हाट आर द ऑप्टिमल सेटिंग्स, रेंज है, आप बेशक रेंज बता सकते हैं, फॉर परफॉर्मिंग डायरेक्ट चॉप यूजिंग फेकोएमल्सिफिकेशन. वैक्यूम, पावर. Power 50%. जी Power 50%. FECO 2 की सेटिंग्स बता रही हूँ. जी जी बताएं. ठीक है. और उधर देख के, जजेस को देख के बताएं ताकि
around 50%, 50 to 55 power, and aspiration 35 to 45, and the vacuum is around 400 to 450. राइट सर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 आपको शो हो रहा है. अगर ऑप्टिक कैप्चर ना हो, बैग में ना हो, तो कितनी पावर रिड्यूस हो जाती है आईओएल की? 0.5. ओके, 0.5 to 1 डायोप्टर है. 0.5 to 1. ठीक है, ठीक है जी. नेक्स्ट पीएफ. What are the common settings for performing anterior vitrectomy in PCR with vitreous loss? तीनों से रेंज बता सकते हैं आप? रेंज Cut rate around 4,000. एंटीरियर विट्रेक्टमी में मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन जो बुक्स आपकी जो बुक्स कहती हैं उसके अकॉर्डिंगली 1,500 to 2,000. सर चलें, ये तो फिर नेगेटिव हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 2. जनरली हमारे पास जो आती हैं उसमें बुक्स में आपके कैंस के में लिखा है ना 800 कट्स पर मिनट. एमसीक्यू भी आता है ये हमारा, ठीक है. सेकंड इज व्हाट आर द टू मेथड्स बता दें ऑफ विजुअलाइजिंग विट्रियस स्टैंड्स इज एंटीरियर चेंबर. Triamcinolone. जी मैम. यस. एंड सेकंड कोई? टेन सेकेंड्स हैं. कोई नहीं, कोई स्टेन यूज नहीं कर सकते? करते नहीं है वैसे, हम लिखा है बुक में इसलिए मेंशन किया इधर. ICG होता है यूज, बट वो यूज नहीं करते. बुक में तो ICG नहीं लिखा हुआ. ठीक है. नेक्स्ट सर, बुक्स में सर 10th एडिशन में है ना ट्राइपेन ब्लू यूज कर सकते हैं, किया नहीं है. नेक्स्ट फौजी फाउंडेशन. व्हाट इज द डोज ऑफ इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स सेफ्टेजिडीन प्लस वैनकोमाइसिन? नहीं है, वो पिछला टीम का था. 2 milligrams in 0.1 ml. ओके, कितनी परसेंट बनती है परसेंटेज में? ठीक है. किसकी बताइए 2 मिलीग्राम आपने? दोनों की. ठीक है. वो कैंसकी में दोनों की लिखी है, अमेरिकन अकेडमी में वैनकोमाइसिन की चेंज है. ठीक है. ओके, राइट. व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ EVS एंड CV प्लस रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव एंडोथेल्माइटिस? जस्ट कंक्लूजन बताना आपने. The endophthalmitis vitrectomy study concluded that for visual acuity better than PL, we go for tap and inject, and for the other group, vitrectomy. Right. And complete and early vitrectomy endophthalmitis study proposed early vitrectomy regardless of visual acuity. And what were the basis of performing early vitrectomy? To remove the bacterial load and नहीं, अगर विजुअल एक्यूटी नहीं है उसका क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया तो होगा ना जिसमें विट्रेक्टमी करनी है. उसकी बेसिस थी फंडस ग्लो. आपको ग्लो आ रहा है यानी विजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द विजन. ठीक है, दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग ना. तो इसमें फिर आपका हाफ आंसर आपने ठीक दिया है सेकंड पार्ट का. ठीक है, ठीक है सर. इसमें हाफ इन्होंने बताया सर. थर्ड राउंड हो चुका है हमारा सर. बस यही टीम्स है, अगले राउंड में भी. अभी अब फोर्थ राउंड है हमारा नेक्स्ट. उसमें सर्जिकल वीडियोस हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन टीमें थोड़ी रह गई हैं, तो मुझे लगता है कि हम शायद 2 वीडियोस भी काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए, पता चल जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अल शिफा यहीं से होगा सर. ये
क्लियर हो गया? अब क्वेश्चंस हम पूछते हैं आपसे। Question number 1. Ji, name the procedure being performed. Implantation of the MF glaucoma valve. Implantation Sir. glaucoma drainage device. Implantation of the MF glaucoma valve, sir. What are the indications of performing this valve? Previously failed TRAB with MMC or rubeotic glaucoma, neovascular glaucoma, or any secondary glaucoma Okay, like ठीक ICE है. syndrome. Right. What is the most important step regarding MF glaucoma valve specifically for this thing? Implanting, Yes. priming of the valve. Yes, excellent. Sir, priming. Okay, for the next PF hospital. ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. Question number 1. Trabeculectomy. ठीक है, पूरा बताना होता है ना आंसर आपने. ठीक है. What are the indications of performing trabeculectomy? The patient is on multiple drugs, if he's having side effects from the drugs, cost effectiveness, if it's uncontrolled because of on medication, progressive visual field loss. Okay. What are the common complications of trabeculectomy? Hypotony, bleb leak, fibrosis, encystic bleb, subchoroidal hemorrhage, blebitis, post-late endophthalmitis. Many complications can be there. Okay, right. This is for Fauji Foundation. Sir, Fazim. Questions? Question number 1. What was the procedure? Implantation of Barwell glaucoma drainage device. Right, sir. So what are the indications of performing this valve? Specifically Barwell or generally glaucoma drainage? Generally भी बता दें, specifically बता दें. Generally, it's previously failed TRAB in certain types of secondary glaucomas, such as neovascular glaucoma. Right. In children,
और इंडिकेशंस कोई बता दें, 3 तो हों, एक और बता दें। ठीक है, इंडिकेशन आपने सही बताई हैं, कॉम्प्लिकेशंस बता दें। Hypotony, corneal endothelial decompensation. यस। एक मिनट। सही पता चलेगा। कॉम्प्लिकेशंस आपने क्या बताई मैम? एक एंडोथेलियल डिकम्पेंसेशन, दूसरा आपने Hypotony जी, बताइए। और Endophthalmitis. हाँ, कोई भी इंट्राओकुलर सर्जरी में वो तो है ना। ठीक है, ये बहुत इजी थी ना, पहले अहमद ग्लोकोमा भी हो चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप हाफ मार्क्स के 2 थे। इसमें और अहमद ग्लोकोमा वेल में जो डिफरेंस है वही पूछा है, ऐसा क्या है? 7 days. जी 7 days. 7 डेज। Skip. अब तो Okay. सर वो 7 डेज का है इन्होंने, तो इसमें मैं थोड़ा सा माइनस होगा आपका ना, 4th का सर, 4th। ठीक है सर, ये नेगेटिव का लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अलशिफा। वी ट्राइड कि सबके साथ एक ही लेवल के क्वेश्चंस हों हर राउंड में। तो क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें या अभी देखना है? ठीक है, क्लियर है। Name the procedure that was being performed. Scleral fixation of the eye with sutures. ठीक है। What are the indications of performing scleral? जोर से दोबारा बताइए तो। Ma'am, scleral fixation with the sutures. Indications are if the bag is not available to put the IOL in, and if the bag, if there is a dislocation of the IOL. ये जो स्क्लेरल फिक्सेशन थी ना स्पेसिफिकली, इसका क्या नाम है, इसका आईओएल कौन सा है? देखिए वो तो स्क्लेरल फिक्सेशन तो बहुत सारी टाइप्स की, इसमें हमने आखिर क्विज में रखा है तो कुछ तो होगा ना। सूचर्स तो हैं, यस। और Bond. ये आगे क्वेश्चन भी है सर, ये आ गया सर, सूचर भी, लेकिन उससे पहले भी अगर आईओएल के बताने चाहिए, आईओएल कौन सा है? Four haptic IOL था, and that we use. ठीक है सर, एक्रियोस आईओएल 4 पॉइंट स्क्लेरल फिक्सेशन। ठीक सर, ठीक है सर। Which suture was being used? Normally we use Prolene. This but was, what was this suture? Ethibond लग रहा था, Ethibond. Ethibond? It's white color का. Normally we use नहीं नहीं, आप Prolene. गलत माइनस हो रहे हैं आपके, आप ना अच्छा बताएं। फिर ये वाला skip. नहीं आप तो बता सर, 2 बताए इन्होंने, चांस लिए हैं 2, दोनों गलत। गोरेटेक्स सर, गोरेटेक्स नहीं कहा, वाइकल और ठीक है, एथिपॉन नहीं, इसका आपको माइनस करेंगे हम, ठीक है, बाकी सबके लिए एक जैसा होना। अरे वो सर पूछ लिया सर, ठीक। अब ये आपके लिए पीएफ हॉस्पिटल के लिए
Questions, PF hospital. Name the procedure that was being performed. Sutureless scleral fixation. What are the different techniques of sutureless scleral fixation? What was being? इसके बाद पूछते हैं. नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने बताना है तो देख लें सही वाली. इसमें कौन सी टेक्निक थी? तो आपने नहीं बताई इसलिए मैंने डिफरेंट पूछा ना. तो इसमें कौन सी टेक्निक थी? जजेस को देख के बताएं. What are the indications of scleral fixation IOL? This type of. If there is a PC rent, not enough capsular support. Capsular support नहीं है और? If there is any contraindication of ACIOL. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसका इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है स्क्लेरल फिक्सेशन जो आपने टेक्निक देखी है करने से? The placement of the haptics. जी. The placement of the haptics. प्लेसमेंट ऑफ हैप्टिक्स. मार्किंग आपको करनी होती है ना कि किस किधर कहाँ मार्किंग करते हैं, किस सिलेबस से कितना जनरली आप यूज करते हैं डिस्टेंस उसका? Around 2 millimeters. मैम स्क्लेरल फिक्सेशन की मार्किंग कितने सिलेबस से कितने डिस्टेंस पे करते हैं? राइट. ठीक ठीक है. डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं जिस तरह ये हमने शो किया आपको. दिस वाज जमानी टेक्निक. जी ये मेन. अब वो सेकंड क्वेश्चन में हमने कर दिया आपका वो आपका स्किप हो गया तो वो तो नेगेटिव के लिए. ठीक है. नेक्स्ट टीम के लिए चलते हैं. फौजी फाउंडेशन. ठीक है. क्वेश्चंस पूछें फिर आपको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 1. Insertion of iris claw lens. ठीक है. iris claw lens. What are the indications of performing this procedure? If there is no capsular bag support, instead of ACIOL, another method is to insert iris claw lens. This is also A type of ACIOL, yes. Right. So indications क्या है फिर? If there is no Support नहीं है, capsular bag support, Yes. Other indications. टेक्निक नहीं आती स्क्लेरल फिक्सेशन करने की तो फिर अगर ये आती है तो ये बंदा कर सकता है तो ये हो सकता है ना इंडिकेशन. और इंडिकेशंस. चलिए नेक्स्ट बताएं आप. एनी मॉडिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ IOL? iris fixated IOL, iris fixation जो करते हैं. वो कौन सा iris fixation है? ये with sutures भी तो करते हैं ना. तो क्वेश्चन क्या है? हाँ क्वेश्चन नहीं समझा. ये iris claw lens जो है ऐसी IOL का, इसके अलावा कोई और ऑप्शन?
या इसकी मॉडिफिकेशन और क्या हो सकती है इस तरह की? आयरिस क्लॉ के और टाइप्स भी तो है ना? ACIOL की टाइप्स, आइरिस क्लॉ की फर्दर टाइप्स। जिस तरह आपने आयरिस के एंटीरियरली रखा है इस तरह आयरिस के पीछे भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं मतलब आई डोंट नो, नहीं वैसे है तो सही, स्किप। ठीक है। तो वो एक इसकी और मॉडिफिकेशन भी है। ओके, अगर काउंट कम हो, एसी की डेप्थ देखनी होती है तो सर इसका फिर स्किप, ये नेगेटिव इन्होंने स्किप बताया। की है। हाँ स्किप किया, चले ठीक है। तो सर हमारे पास तो काफी वीडियोस और हैं, काफी है सर। स्कोर देख लें सर। राइट सर, जी सर थैंक यू सर। फिर हम फाइनल स्कोर देख लेते हैं। राइट थैंक यू। स्कोर इज बीइंग फाइनलाइज्ड। हम तो चाहते थे टीम ज़्यादा है, वो आई ही नहीं है। क्वेश्चंस हमने ज़्यादा बनाए थे। कोशिश पूरी ये थी कि एक तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बने और एक लेवल के हों। जितने भी क्वेश्चंस थे आपने नोट किया होगा, एक ही टॉपिक से हम उठाते थे और फिर 3 क्वेश्चंस बनाते थे। और ये सारे क्वेश्चन 10th एडिशन से थे। कैंसकी में हर चीज़ मैंशनड है, एक क्वेश्चन के अलावा वो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन वो मैंशन नहीं है उसमें, वो मैं वैसे ही रख लिया, ठीक है। उसके अलावा सारे मैंशन है। और बाकी जी नई बुक में आ गई है, आ गई, वो तो अक्सर का सही था। और इस तरह कोशिश की थी कि आप लोगों का लेवल एक जैसा हो, जहाँ इजी हो जाए तो कोई कुछ कह ना सके कि ये मुश्किल था या इजी था, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अभी आने लगा रिजल्ट। और ये सारा कोई किसी बुक से नहीं लिया, कोई AI नहीं था, सारा टाइप किया है आप लोगों के लिए स्पेशल। जी मैं वैसे बता रहा था मैम कि इनको पता हो कि ऑनेस्टी से काम है। सर थैंक यू। थैंक यू। पार्ट 2 का कन्वीनर हूँ, एग्जाम्स भी लेता हूँ। लेट मी टेल यू, इससे 100% सिंपल क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में। मैं ये सोच रहा था कि ये एग्जाम में मुझे तो मैं तो फेल हो जाता हूँ, ठीक है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक सो द स्टैंडर्ड्स वर टू हाई फॉर अ नॉर्मल एग्जामिनेशन व्हाट वी आस्क द क्वेश्चंस इन फाइनल FCPS Journal of Ophthalmology. And the main thing is I was surprised that most of the answers were correct, and ये तो भी बहुत ही negative marking कर रहा था। हम कभी इतनी negative marking नहीं करते। Once मतलब this is just for you people those जिन्होंने exams देने हैं, कि मतलब we always try to facilitate the candidate and we'll give him a more of a, आपको जैसे ये तो एकदम करते हैं negative marking, हम हमेशा positive marking करेंगे और उसे facilitate भी करेंगे। And thing is, because even we open up the book and you start asking a question, it can't be 100% correct. What I would emphasize is कि देखें वहाँ अपने आप को ना, जो एग्जाम में होता है कि अपने आप को घबराना नहीं, जैसे कहते हैं ना घबराना नहीं है वो, and you have to keep on thinking कि what could be the possible answers and just answer it and don't think so कि ये जो जब मैं इनसे आंसर करूँगा ये एग्जामिनर जो है ना मुझे कहीं फंसा रहा है। दिस इज ऑलवेज द थिंग इन द एंड कि जो उसने मुझे ये सवाल किया तो उसने आगे ये कहा था, मेरा ख्याल था ये मतलब है नहीं। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फैसिलिटेट यू एंड ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये चीज़ें याद रखें। और मतलब वो मैं अगर अपने तजर्बे में बताऊं तो आपको ये बताऊं कि जितने इसने क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप पहला जो इसके ने व्हाट इज द इंडिकेशन और व्हाट इज द नेम ऑफ थिंग, ये को बोल देते हम कहते हैं शुक्रअल्लाह, चलो जी अभी आगे चलें, ठीक है ना। सो यू हैव पास्ड व्हेन यू हैव आंसर द फर्स्ट पार्ट। मतलब जितने क्वेश्चंस किएंगे उसके बाद वाले तक हम सिर्फ उससे जो एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं वो इज ओनली टू
make sure that how ज़्यादा number किसको देने मतलब कोई what we are aiming is to give you an adequate marks, and adequate marks is coming to the 60% where you are going to pass. And if you're good, you go to up to 60, 90, 70%, and then if you're excellent, you go to 80 and plus. तो वहाँ तक बात बहुत कम आती है. तो so I think so. This is a very good exercise, and I must appreciate Lal in making these things. और वो दूसरा किधर गया आपने? हाँ. Sir, Azim, sir. And I think so. We'll like to carry it on. और ये I think so. Next we will make it a compulsory for all the other teams. अगर नहीं आए तो उनके supervisors की supervisorship वापस कर लेंगे. Sir. ये बता देना आपने अभी. देखो तो अच्छी टीम्स जानी है. So we will ask them or the madam to announce. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है. Actually, so we have the results. So the team at third position is Al Shifa Trust Eye Hospital. Sir. So the team that secured second position, क्या लगता है? क्योंकि फर्स्ट का तो पता चल जाएगा उसके बाद. तो that is PF Hospital Islamabad. There is difference in points. फौजी फाउंडेशन स्ट्रेटेजिक खेला है, उन्होंने नेगेटिव वाले बताए ही नहीं, वरना आप दोनों इक्वल थे ऑलमोस्ट. जी सर. अस्सलाम वालेकुम. जी जी सर. So the first position goes to Fuji Foundation Hospital. That's great.
Right.